of a plant and machinery. Okay. Identification, it is related to identify your subject asset. When you are conducting the any physical inspections of the subject properties, what you have to take care, what are the some preliminary terminology that you have to understand for the valuation process. Okay. So the valuation is a process which is taken by the step by steps. So first steps that is related to the you are getting the engagement. Okay. You are appointed as a valuer. You are doing the site inspections. You are collecting the data from the client. You are collecting data from the site inspection or visual inspection. You are collecting the data as a part of the market survey. Okay. You have to collect the data, that is a micro identification and macro identifications related to the assets and company. After collecting the data, you have bunch of the data. You are analyzing the data available, and accordingly to purpose of valuations and base of value, you are selecting the approach. Under the approach, you are selecting the methodology and you are doing some numerical works and reach at the conclusions. Okay. So first, that is a what you have to do during the site inspections, which are the data that you have to collect, what is the importance of the collection of the data, and some preliminary terminologies that used in the valuation process. So whenever valuer of the plant and machinery are appointed, just a minute. Okay. So uh, as a part of the source of data for verification, site पर क्या है? You may get the fixed asset registered. Yeah, you may get a listing of the plant and machinery with technical specifications. Yeah, you get nothing, and you have to make a physical inspection and make a inventory. Okay, what is available on the sites? Okay, so these are the what valuer will have to make the inspections. When you are making the inspections, you have to identify or collect the data in a two way. One is a macro identification. Second is a micro identifications. So what do you mean by the macro identification and micro identifications? So just first we discuss about the micro identification. Micro identifications means of you are going to inspect, okay, whatever the machinery available on the site पे जो भी मशीनरीज अवेलेबल है, एक एक मशीनरी को आप देखते हो और वो मशीनरी के डिस्क्रिप्शंस, मॉडल, टाइप, सीरियल नंबर, साइज, कैपेसिटी, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कब इंस्टॉल हुआ था, कब परचेज हुआ था, फाउंडेशन है कि नहीं है, रिफेब्रिश किया है या मॉडिफिकेशन किया है, कितना एनर्जी कंजम्पशन है, डिटेल्स ऑफ ड्राइव कैसे चलता है, records of maintenance ये collected. मतलब you are going to the asset to asset, machine to machine available on the sites, and you are collecting data of a subject asset or subject machineries. All the technical specification you are collecting as a part of the micro identification. Second identifications, that is a macro identifications. You are collecting data about the company who is operating the machineries, just like growth rate of the industrial that segments, national growth rate of the segment or sectors. What is the product and byproduct of the company? The process layout and line of process. What is the install capacity and actual productions? How availability of the raw material and other utilities is available, quality of a finished good and its market demand, in how much number of shifts are utilized machinery, interdependency and maintenance. You are observing some financial ratios, okay, that may be a fixed asset to turnover ratios or profitability ratios, and you are verifying the regulatory measures
Regulatory measures, matlab to operate the plant, whatever the statutory permissions required from the center, state, or local body that you are verifying. Okay. So collecting data about the company, its product, line process, availability of the raw materials, maintenance policies, quality of finished goods, financial ratios, all the statutory status of the all the statutory permissions is called a macro identifications. Okay, both are the important for the valuation process. Your micro identifications will help you in selection of the cost approach and market approach, while your micro identification will help you in selections of the income approach. Okay, so collections of the data related to the asset, which is called the micro identifications. Collections of the data related to the company, its financial ratios, install capacity, availability of raw materials, uh, status of statutory permissions is called the macro identifications. Okay. So micro and macro identifications required during the site inspections by the valuer of the plant and machineries. Key points. Well, majorly, we are making the inspections by the visual observations only. Okay. So what you have to take care? So name of the machine with technical specifications. What are the technical specifications you require? It is discussed as a part of the micro identifications: model, type, serial number, size, capacity, material of constructions, year of purchase, installations, foundations, refurbishment, status of refurbishment, maintenance record, energy consumptions, detail of drives. That all the technical specification you have to collect. Okay. So you can collect the data from the nameplate. Yeah, you can collect data from the operator. Yeah, you can collect data of the floor supervisor or shop supervisor or any technical persons of the company. Okay. During the inspections, you have to observe physical conditions, wear and tear, and deteriorations. Machine की conditions क्या है that you have to observe. Second, working atmosphere, surrounding environment, and skill of the operators. Working atmosphere matlab okay, how company is following rules and regulations as per the factory act or not. Okay, is machine are located as per the process layout or not? Is there is a sufficient gap between the machine to machine, or sufficient ventilation is provided, sufficient escape way is provided, or whatever required. Okay, surrounding atmosphere matlab how nearby other factories are. Okay, skill of the operators that you can record from the company managements. Then uses a how much number of shifts are utilized. Some factory may use single shift, double shift, or triple shift. Status of records of maintenance. Okay. Then statutory permissions and licenses for the implementations. While doing the inspections, whatever the asset available, you may have to classify that is asset related to the lease contract or the land rent basis, which is not owned by the owner but available on the site. Then you may surplus, scrap, or non-productive machineries. Surplus matlab it is not in used, that also available. Scrap matlab not in the functional positions. The asset has loses functionality or utility, not productive use. Okay. Then you may also may verify if asset is a surplus, scrap, or laying ideal machine can use with or without repair. Is there is a cost to cure or so while you are making a site inspections of the any plant, you have to collect data in this way, including
macro and micro identifications. Okay. Yeah. Any doubt or any question? Okay. Generally, as a valuer, we can classify our asset in a various way. Here, some prime classification is noted, just like process or production machinery, or say core machinery, which are directly engaged in the manufacturing process. Okay. Then utility machinery, which are work as a supporting machinery to the core machinery or production machineries. Okay. Just like air compressor, boiler, uh, cooler. Okay. Then electrical installations to run or to charge the machinery. Electrify करने के लिए जो whatever the installation is there. Control systems and panels to operate all the production machinery and utilities in a systematic and safe ways. There will be a control systems. Then, as a part of the utility, process piping, that piping with a valve, fittings, pump, controllers, pipe may be required for the raw materials, pipe may required for the semi-finished material, pipe may required for the utilities, just like a gas, water, any. Okay. So piping, foundation, heavy foundations or any specialized peat is said. Supporting structures, just like a catwalk, ladder, steel structure, or platform required for the operator or operations of the machines. Material handling equipments, just like a forklift, loader, conveyor, yeah, say locomotive machines, laboratory and testing equipments, workshop tools that for the repair of the spare parts or parts of the machines, special equipment that required as a jigs, fixtures, tool, dies, and any software and IT equipments. That is a many times it's a part of the machinery or additional software and equipments. Yeah, any additional design criteria, software developments, or so whatever machinery or listing we are making, we can classify or we can subgroup according to these functions in a process of manufacturing. Okay. So core machinery, utility, electrical installations, control systems, piping, foundations, supporting structures, material handling equipments, lab equipments, workshop tools, special equipments, software IT, or many more we can do according to the functionality of our machines. Then importance of the technical specification. Why we required to collect each and every technical specifications, because technical specifications directly impact the costing or pricing of the machine. We have just like an air compressor with a capacity of 100 CFM. This is not just enough. Which types of air compressor it is? Okay. Pricing of the based on the type, it may be a differ. Then it is a single cylinder or multi-cylinders. For which fluid it is a use? It is for the air compressor, for the air, liquid, or any else. Just take a let's understand by the one example only. Okay, we have 700-liter SS receiver reaction vessels with the stirrer. Is this much identifications or data is enough or not? Okay. So as a valuer, we have to judge or make an assessment. What is a 700 liter? It is a batch capacity of vessel. Yeah, it is a water capacity of vessels. Normally, vessels design, if batch capacity is a 700, then water capacity may design up to the 800 or 1000 liters. Okay. Then
assets, then which types of assets is it? 304, 316, 316L, because variation in the assets may, there is a variation in the cost. Then it is a vessel. So how much thickness of the steel? 8 mm, 10 mm, 12 mm. It's fitted with the coil or not. It is a reaction vessel. So heating coil is a fitted or not. Then what is the thickness of plate? Which types of stirrer are used? Able to reach. सही है, जो प्लांट चलाता है ना उसे सब कुछ पता होता है, या हम उससे निकाल नहीं पाते या वो देता है. Most of the valuations that we are doing in under CIRP, there is a hostile environment between the RP and the promoter, the company. We are the secondary level interaction with the promoter. So वो हमारे साथ तो कुछ भी शेयर करने के लिए तैयार ही नहीं होता, आरपी के साथ नहीं शेयर करता है, हमारे साथ तो बिल्कुल नहीं करता. तो ये यहीं पे बहुत मुश्किल होती है वेसल की, जो आपने जैसे प्लेट की थिकनेस कही 6 mm और 10 mm. नाउ दैट ह्यूज डिफरेंस, बट वील नेवर कम टू नो कि ये 6 mm में है या 10 mm है, अंदर हीटिंग एलिमेंट्स कितने हैं कितने नहीं हैं, अंदर कोई सब वेसल्स तो नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है उस चीज का सर. सही बात है ना. फॉर दैट there is a one more subject or chapter, that is the industrial processes. ओके, सो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में क्या पढ़ाया जाता है कि भाई कोई इंडस्ट्री है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट या मशीनरीज अवेलेबल होती है. ओके, तो एक तो वहां से हमें मशीनरी के नाम पता चल सकते हैं. दूसरा, भले एसेट के बारे में आपको पता नहीं है कि भाई कितने गेज और कितनी ये होती, whatever the exact technical specification in our under the whatever the given condition and circumstance we are doing the valuations. बट अगर आपको ओवरऑल प्लांट की कैपेसिटी भी पता चले, देन यू कैन मेक द रिवर्स कैलकुलेशंस. इट इज अ पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग. ओके, और अगर वर्स्ट केस में अगर कोई मतलब एसेट का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, देन थर्ड थिंग्स कम, दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग. सही है. इफ डेटा इज नॉट अवेलेबल फॉर द सीएफआई और वॉट एवर, किसी के पास भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हाउ एज ए वैल्यूअर you make the inspections and what judgment you take, you have to mention in a part of the report. देखिए, आपके पास डेटा नहीं है, सीआरपी के पास डेटा नहीं है, किसी के पास डेटा नहीं है, जब आपने वैल्यूएशन किया है तो आपने कुछ जजमेंट तो लिए होंगे बेस्ड ऑन योर विजुअल इंस्पेक्शन. तो पुट डाउन दिस योर ऑब्जर्वेशन इन रिपोर्ट्स, और उस पे जो आपने प्रोसेस की है, अगर उसके पास भी डेटा भी नहीं है तो हाउ एनीवन कैन चैलेंज यू. सही है. चैलेंज कब आती है? जब डेटा अवेलेबिलिटी होता है, यू हैव डेविएट और देयर इज अ वेरिएशन इन योर रिपोर्ट्स. सही है. तो देखिए, कोई भी वैल्यूएशन प्रोसेस होती है. ओके, एनी वैल्यूएशन क्या है एक्चुअली? एनीवन, व्हाट इज अ वैल्यूएशन? It is the opinion, estimation. ठीक है, ओपिनियन है, ये बहुत पुरानी बात हो गई ओपिनियन. Estimation. फिर ट्राई तो कीजिए, तो कोई बात नहीं वैसे तो. Estimating technical is valuation. Assessment, no. Estimation, assessment. Assessment. ओके, और कोई ट्राई करना चाहेगा? वैल्यू इन द आईज ऑफ यूजर. नहीं, ये सब ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी बात है. And it is again one thing that we Indian valuer are lacking.
That is a theoretical. Determining the value of asset or the business. Okay. So it is a Fair value. act or process वस्तु के मूल्यों forming. सर मैं बोल देता हूँ. It is a act or process of a forming a conclusion on a value as of valuation date. सही है? Act or process formation conclusion on a value as on date. It is a process or act to determine value, to conclude a value. सही है. अब आपका जो process and value है, okay, it will depend on the preliminary three things. One, what is the purpose of valuations? Now it is an indent of value. Second, according to the purpose of valuation, what base of value you have selected? Okay, just like a market value, fair value, liquidation value, investment value, equitable value, or whatever. Base of value, what base of value you have selected. And third, under which circumstance and conditions you are doing the valuation. सही है. आपने आपको किसने अपॉइंट किया है, एसेट की कंडीशंस क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा क्या है. नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा दो लेवल पे होती है. एक अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, दैट इज माय पर्सनल लेवल. भाई मेरे पास इतने डेटा अवेलेबल है, that I collect from the client, that I collect from the inspections, that I collect from the market survey, or I have some own my data set मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे. एंड सेकंड जो डेटा अवेलेबल हो या डेटा दैट इज एट द प्रोफेशनल लेवल. देखिए, डेटा आपके पास नहीं है, इट इज योर पर्सनल लिमिट. बट डेटा किसी भी प्रोफेशनल के पास नहीं है, इट इज योर ओवरऑल लिमिट्स. आपके पास डेटा नहीं है, यू मेक सम assumptions एंड लिमिटिंग कंडीशंस. सही है. और जब किसी के पास भी वो डेटा नहीं है, तो आपके assumption एंड लिमिटेड कंडीशन सही मालूम किए जाएंगे. या मगर किसी के पास ऐसे प्रोफेशन एज ए एक्सपर्ट किसी पास डेटा है, तो आपके assumption और लिमिटिंग कंडीशंस को चैलेंज किया जा सकता है अगर योर assumptions has a deviation from the fact. Okay, so purpose of valuations, base of valuations, and conditions and under circumstances you are doing the valuation. आपका जो पूरा फॉर्मेट होगा रिपोर्टिंग का, वो स्ट्रीमलाइन में होना चाहिए. और यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग. ओके, या एनी मोर क्वेश्चंस? देखिए, लिमिटेशंस ऑफ अवेलेबिलिटी डेटा आज से नहीं है और सिर्फ हमें नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है ये चीज. बट हाउ यू आर डीलिंग एंड हाउ यू आर फॉर्मेटिंग योर कंक्लूजन्स, इट इज अ मैटर. और ये सारी आप रिपोर्ट राइटिंग में चीजें होनी चाहिए. ओके, और सर्टेन डिस्क्रिप्शंस. Sir, एक minute. If you can refer to the previous slide, please. I mean, the subgrouping, now previous one, the subgrouping, you are asking us to take the foundation also and as a group of asset, I mean, plant and machinery. Yeah. Can you please explain? All the foundations related to the machinery structure to support, it is a classified as a plant and machinery. Okay. So machinery का जो भी foundations है, that foundations you have to add as a part of the costing of your machine, or say replacement cost new or reproduction cost new of the machines. Okay. For example, I have a doubt on the same question. For example, if your workshop is 10,000 class, I'm giving a guess. 10,000 class means you should maintain certain quality of dust or quality in the workshop. So to maintain that, the floor should be very neat. So that comes into civil
So still being a plant and machinery, you should नहीं, consider as it is a part of the, अगर आप फ्लोरिंग की बात कर रहे हैं, it is a part of the civil. बट मशीन को सपोर्ट करने के लिए अगर फाउंडेशंस किए जाएंगे, दैट इज अ प्लांट एंड मशीन बेस. सही है. आपका जैसे फर्नेस है, फर्नेस को सपोर्ट करने के लिए. आपका बॉयलर लगा है, बॉयलर को सपोर्ट करने के लिए. क्योंकि अगर आप फाउंडेशन नहीं करेंगे तो कोई भी मशीन्स विल नॉट वर्क प्रॉपरली. आपके टैंक्स, वेशल्स है, या पूरा केमिकल प्लांट है विच रिक्वायर्ड द फाउंडेशंस, सो स्टेबली वर्क कर सके. ओके, सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर मशीनरी. सो मैनी माइन्यूट डिफरेंस. जैसे किसी मशीनरी के चारों ओर, इफ यू आर डूइंग द फेंसिंग for the protections of the machines or protections of the human, then this fencing also considered as a plant machinery, part of that machines. Okay. Yeah. Anyone? Ascertaining discrepancy. When you are making the inspections, दो चीजें हो सकती है. एक, आपको जो लिस्ट मिली थी, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट आप मेकिंग द साइट इंस्पेक्शंस, तो क्या हो सकता है भाई, लिस्ट में 100 मशीन दी गई थी और 100 में से 2 मशीन नहीं है और 3 मशीन ऐसी है जो लिस्ट में नहीं है. सही है. मतलब साइट पे है 101 मशीन, आउट ऑफ 100 2 मशीन्स नहीं है और 3 एडिशनल मशीन है. तो ये दो चीज हो सकती है कि भाई एसेट फिजिकली एग्जिस्टिंग ऑन द साइट बट अकाउंटिंग रेफरेंस इज नॉट अवेलेबल. साइट पे अवेलेबल है बट आपको जो लिस्टिंग फिक्स एसेट रजिस्टर दिया गया है उसमें नहीं है. Okay? So what may be a probable reasons? So assets have been manufactured by company's own premises, own material, own labor, self-fabricated assets. That's why it is not available in the fixed asset register or listing. Many times machine has converted. So large tank has been converted into the small numbers of tank. तो आपको लिस्ट दिया गया था, उसमें 1000 लीटर की टैंक थी. साइट पे जाते हो तो आपको 250 लीटर की 2 टैंक मिलती है. तो मे बी देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ द मशीन्स इनटू द स्मॉल कैपेसिटीज. मैनी टाइम्स कॉस्ट ऑफ द एसेट ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस. ओके, अकाउंटिंग में 2 टाइप्स के एक्सपेंसेस में क्रिएटेड. दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, दैट इज अ डे टू डे एक्सपेंसेस. Or say capital expenses, that is a asset will be used for the more than one financial or more than one period. So आपका जो खर्चा किया था, that is in a account treated as a revenue expense, day to day expense, but it was actually capital expense. So there is a misunderstanding of the accounting. Account has it treated as a revenue expense. So asset is available on the site, but fixed asset register में नहीं दिखाई देती है because it is treated as a revenue. Then asset taken on the lease, rent or contract, or coming from the sister companies and put in use. Asset कंपनी की ओनरशिप पे नहीं है. इट इज ऑन द लीज, रेंट और कॉन्ट्रैक्ट बट अवेलेबल ऑन द साइट बट नॉट लिस्टिंग एज अ कंपनीज ओन एसेट्स. सो दिस आर द प्रोबेबल रीजंस के एसेट अवेलेबल है बट अकाउंटिंग रेफरेंस या लिस्टिंग जो दिया गया है उसमें नहीं है. सेम इससे उल्टा हो सकता है कि एसेट्स आर एग्जिस्टिंग ऑन द अकाउंटिंग रेफरेंस. मतलब लिस्टिंग में एसेट है but physically assets are not available on the site. Okay, then it may be a asset already scrapped out, not in use, or laying outside factory premises for the repair. अभी भी लिस्ट में अवेलेबल है बट वो स्क्रैप्ड हो चुकी है, नॉट इन यूज है, या फैक्ट्री के बाहर गई है फॉर द रिपेयर पर्पस. या हो सकती है एसेट ऑलरेडी सोल्ड आउट, पैसे भी ले लिए गए हैं बट स्टिल अवेलेबल इन द लिस्टिंग और इन अ फिक्स एसेट रजिस्टर. तो या उसका उल्टा आइटम ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू नेचर
कैपिटलाइजेशंस। यहाँ कैपिटल के कर दिया गया है, जबकि वो रेवेन्यू नेचर था। या हो सकता है कि एसेट इज गिवन ऑन द रेंट, लीज और लेइंग इन सब कॉन्ट्रैक्टर प्रीमाइसिस। एसेट को कंपनी ने किसी और को रेंट, कॉन्ट्रैक्ट या लीज पे दिया है एंड इट इज अवेलेबल ऑन द आउटसाइड ऑफ प्रीमाइसिस और से ऑन अ सब कॉन्ट्रैक्टर प्रीमाइसिस। So according to the listing available to you, according to your site inspections, end of the site inspections, you have to make a addition and deletions according to the machinery available on the sites, and you have to identify why asset is available on the sites, though it is not available on the listing. Yeah, why asset is not available, though is available in the list. तो बाहर की asset, rent contract की asset available हो सकती है, which is not available in the list. या हमारी खुद की एसेट रेंट या कॉन्ट्रैक्ट पे किसी और को दी हो सकती है, या एसेट फॉर द रिपेयर पर्पस आउटसाइड ऑफ प्रीमाइसिस हो सकती है। सो लिस्टिंग में है बट साइट पर अवेलेबल नहीं दिखती है। So this discrepancy we have to nullify, make a addition and deletions with discussion with the technical team or management teams, and we have to prepare final list of the machines with his characteristics. That may be a rent based, contract based, yeah, lease based, yeah, surplus, scrapped, yeah. If it is a remaining ideal, it is a required cost to cure, or say it can be used with repair or it can be used without repair also. So listing of the installed and uninstalled machinery laying at the site by physical inspection and listing है हमारे पास. Compare of the fixed listing with the fixed asset register or whatever the listing available with us. Discuss on the discrepancy available on the site and not in FR, or available in the FR or not in the sites. Final listing with addition and deletions. Identifications of productive, non-productive, scrap, surplus, off-balance sheet asset or machinery can be used or without used. Okay. So as a valuer, we have to identify the asset is a productive or non-productive, scrap or surplus, off-balance sheet. Okay. It is just the classification that we have earlier discussed. So what do you mean by the productive asset? So simply those assets are hold productions of goods and services. Is means assets ability to generate the profit and cash flows is called the productive assets. Okay. So आपके जो कोर मशीनरी है, यूटिलिटी है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस है, कंट्रोल सिस्टम्स है, फाउंडेशंस है, all these are the productive assets. Okay. Non-productive assets, asset which does not produce any output but held use for the supporting facility in the productions of the goods and services. Okay. Which are not part of the productions, but it is hold for the supporting. Just like you are finding a vein bridge at the gate of the factory premises. It is not part of the productions. But vein bridge क्या करता है भाई? अंदर जो फैक्ट्री में माल जाता है, रो मटेरियल्स, और बाहर आता है उसका वेट कैलकुलेशन, सपोर्टिंग द फैसिलिटीज. आपके मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, लोकोमोटिव मशीनरीज, कार. Okay. These are the not part of the productions, but it help for the production. So this all are called the non-productive assets. Okay. उसके बिना फैक्ट्री में भी productions चालू रहे. Now what do you mean by the surplus asset? Anyone?
extra, which may be useful in future, but presently it is not in use. Not in use. Yeah. Presently it is not in use. In redundant future capacity. we may require it, or we may not require it. Standby assets. Standby. Benefits and process में use नहीं होंगे. नहीं, standby assets are never called the surplus asset. Okay. Additional some, I mean, Sir, which are not required actually. Which are not required today and even in future. Yeah. Also. Yeah. Also, it is called the surplus assets. Okay. Those assets that are not essential for the operation of the business by the company or productions or goods and services. सही है? Many times, surplus comparison of the asset held by the company and the asset required for the installed capacity will lead you to identification of the non-productive and surplus assets. कंपनी के जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसके अगेंस्ट में कितना चाहिए उसके मशीनरी, उसके अगेंस्ट में कितना अवेलेबल है, वो डिफरेंस फाइंड करोगे तो यू विल गेट आइडेंटिफिकेशन के सरप्लस एसेट कितनी है. सर सरप्लस एसेट का एग्जांपल कुछ दे सकते हैं? हाँ, मैं वही बताता हूँ. मैनी टाइम्स योर एंटायर कैपेसिटी इज अ सरप्लस कैपेसिटी. ओके. वंस अपॉन ए टाइम मार्केट में अच्छी डिमांड थी, आज से 5-6 साल पहले, और किसी ने प्लांट डाल दिया 100 टन पर डे का. ओके. और उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, मतलब जो आउटपुट निकलता था एट 80% यूटिलाइजेशन, 80 टन पर डे हर रोज निकलता था और हर रोज मार्केट में सेल आउट भी हो जाता था. अब ड्यूरिंग द ईयर, ओके, 5-6 साल में दूसरे कॉम्पिटिटर आ गए, दूसरे मतलब सप्लाई बढ़ गई, और उसके साथ में ऐसा हुआ कि जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड रिड्यूस हो गई है. नाउ दो, एक तो कंपटीशन बढ़ गया और डिमांड रिड्यूस हो गई है. प्लांट इज कैपेबल टू जनरेट 80 टन पर डे टेक्निकली, but due to the demands and competitions, there is a only consumptions of the 30 ton per day. अब जो यूटिलाइजेशन फैक्टर आ गया, इट इज 30 टन पर डे. तो जो रेस्ट कैपेसिटी है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ सरप्लस कैपेसिटी. एंड जब भी वैल्यूएशन करोगे आप, तो उस प्लांट का एज ए 30% या 30 टन पर डे के हिसाब से ही वैल्यूएशन होगा. क्यों? क्योंकि it is suffering by the economic obsolescence, external factors, competitions, increase in the competitions and decrease in a demand of the product. सही है? आप खुद सोचो, अगर आप ये प्लांट खरीदने जाओगे तो कितने में खरीदोगे? एज ए 100 टन पर डे या एज ए 30 टन पर डे? 30 टन per day. 30 टन पर डे ही खरीदोगे, तो वैल्यू उसकी आपने ही खुद की के 30 टन पर डे होनी चाहिए, रादर देन एसेट तो है 100 टन पर डे की. सही है? सो सरप्लस एसेट्स. मैनी टाइम्स कंपनी में क्या होता है कि ड्यू टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजीज या चेंज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कुछ मशीनी चेंज कर देते हैं या मशीन रिप्लेस कर देते हैं, तो ओल्डर मशीन बिकम अ सरप्लस. सही है? प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज कर दी, उसमें 2-4 पुराने मशीन्स नहीं चाहिए थे और उसके जगह कोई नए मशीन्स लगा दिए, जो मशीन्स आउट ऑफ प्रोसेस लाइन हो गए, इट इज अ सरप्लस एसेट फॉर द कंपनी. क्लियर? एनी डाउट इन द सरप्लस? देन ऑफ बैलेंस शीट एसेट, इसको बहुत इजी है, इसको बोलेंगे ऑफ बैलेंस शीट एसेट. बैलेंस शीट में नहीं दिखता है. From the bank account of company. सही है? जो बैंक की सॉरी, जो कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट नहीं है, इट इज ऑफ बैलेंस शीट एसेट. तो कौन सी एसेट दोस कंपनीज आर होल्डिंग
we are called the off balance sheet asset. इसका यूजफुल लाइफ हो गया है, आउटडेटेड हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रेंड से लेकर आए हैं। हाँ, those assets company holding on the rent, contract or lease base asset are called the off balance sheet asset, क्योंकि company is not owing the ownership, but company has a right to use. So asset hold on the rent, contract or the lease is called the off balance sheet asset. Yeah. Any doubt? Any question? But the rent should reflect on the balance sheet, right? Rent should be reflected in the balance sheet. It will be treated as an expense, not an asset. Got it. वैल्यूएशन में कंसिडर नहीं करेंगे। वैल्यूएशन में कंसीडर करना है कि नहीं करना है, इट इज बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। सही है। अगर आप सिक्योरिटी पर्पस से या सिक्योर लैंडिंग पर्पस से करते हो तो नहीं आएगा। सही है। आप मर्जर एक्विजिशन पर्पस से करते हो या इंश्योरेंस पर्पस से करते हो तो आएगा। दो एसेट इज अ नॉट ओन बाय द कंपनी। इंश्योरेंस पर्पस से करोगे तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लीज बेस्ड रेंट बेस्ड एसेट है विच इज ऑपरेटेड विद इन द प्रीमाइसी ऑफ द ऑनर, वो इंश्योरेंस पर्पस के वैल्यूएशन में आएगी। मर्जर एक्विजिशन पर्पस के लिए भी आएगी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू के पर हिसाब से भी आएगी। लैंडिंग पर्पस से नहीं आएगी। सिक्योर लैंडिंग पर्पस से नहीं आएगी। सही है। तो पर्पस क्या है उसके बेस पे डिपेंड है कि ऑफ बैलेंस शीट एसेट का वैल्यूएशन होगा कि नहीं होगा। अगेन मतलब वो तीन चीजें हैं, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, बेस ऑफ वैल्यूएशन एंड अंडर सर्कमस्टेंस एंड कंडीशंस यू आर डूइंग द वैल्यूएशन, उस पे आपकी पूरी वैल्यूएशन प्रोसेस डिपेंड होती है। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो वी कैन डिस्कस। Sir, I have one question, sir. हाँ हाँ Hello, बोलिए, सुन रहा हूँ sir. मैं। Like pressure vessel, data is not available on the site, so we can utilize the any instrument who measure the thickness of the vessel or who pay the cost. Can you explain about this? सर देखिए, फर्स्ट थिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ योर, हमने इसके बारे में बात नहीं की है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर एंगेजमेंट लेटर। Yes, sir. Yes. तो what you have scope of work and what is your remuneration, उसमें include क्या होगा, whatever the external testes you have made, it is a part of the remuneration or not, you will charge extra. If client is agree then you can do। Okay, 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 sir. Okay, सही है। Otherwise, okay, any electrical or mechanical or else test, on-site test is a not part of the value or responsibility। okay, okay. सही है। अगर आपको करना है गेज मेजर करना है तो थिकनेस मीटर आता है, अल्ट्रासोनिक्स मीटर्स भी आते हैं, आप लेके Yes. जा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, नो वन रिस्ट्रिक्ट यू, बट Okay. कमर्शियली you have to discuss with who is appointing to you। Okay, 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 okay. so recently we have appointed by the, मतलब हमारी अपॉइंटमेंट थी, कुछ वेसल्स अंडर कंस्ट्रक्शन वेसल थे और 10-12 साल से पड़े थे, तो मेंशन हमने मतलब हमारे एंगेजमेंट लेटर में यही लिखा था भाई, वी विल मेक द विजुअल इंस्पेक्शंस इफ कंपनी सजेस्ट एनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक टू आइडेंटिफाई एज अ पार्ट ऑफ द वैल्यूअर। सो Yes. जो भी कॉस्टिंग होगा टेस्ट का, that will Yes. be made by the third party and the client will pay to direct third party। Okay. Okay. सही है। तो Okay. आपके स्कोप ऑफ वर्क में क्या है वो आपको पहले से ही क्लियरिटी होनी चाहिए। Okay. सही है। Okay. Right. ओके, एज, इफेक्टिव एज एंड लाइफ, फिजिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ, बैलेंस इकोनॉमिक लाइफ।
Okay. What is the age? Chronological age. But what is the age? So age is a number of years that have been lapsed since property was originally built और प्लेस्ड इन सर्विस. देखिए प्लांट एंड मशीनरी में एसेट की एज कैलकुलेशंस 3 पॉइंट से हो सकती है. फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड पॉइंट फ्रॉम द ईयर ऑफ परचेज, एंड थर्ड पॉइंट फ्रॉम द ईयर ऑफ प्लेस इन अ सर्विस और ईयर इन अ पुट इन यूज. किसी भी मशीनरी की एज यहां से कैलकुलेट हो सकती है. 3 पॉइंट्स है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईयर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ पुट इन यूज. Whenever you are doing the valuation under the Company Act, keep in mind, your age is always calculated from the year of put in use. Okay. और किसी दूसरे पर्पज से करते हो, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक अ जजमेंट कि कहां से मुझे एज कैलकुलेट करनी है, परचेज से, मैन्युफैक्चरिंग से या पुट इन यूज से. कई बार क्या होता है कि भाई बहुत सारे ऐसे बड़े प्लांट है जिसके इरेक्शन कमीशनिंग में ही 3-4 साल लग जाते हैं. अगर इरेक्शन स्टार्ट हुआ 2001 में तो पूरा प्लांट बनते बनते हो जाएगा 2004 या 5. तो ऐसे सरकमस्टेंस में एज स्टार्ट होती है फ्रॉम द पुट इन यूज. बट कई बार ऐसा होता है कि कंपनी परचेज द मशीनरी बट 2-3 साल तक उसने यूज नहीं किया और 3 साल के बाद यूज करता है. तो ऐसे टाइम में उसकी एज कैलकुलेटेड स्टार्ट होगी फ्रॉम द ईयर ऑफ परचेज. सही है. इफ देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ईयर ऑफ परचेज, तो अकॉर्डिंग टू योर पर्पस टू वैल्यूएशन यू हैव टू टेक द कॉल कि कहां से आपको उसकी एज कैलकुलेट करनी है. सही है. नाउ व्हाट इज द इफेक्टिव एज? सॉरी सर, एज पर कंपनी एक्ट क्या बोले थे सर? इट इज एज पर ईयर ऑफ पुट इन यूज, ईयर ऑफ ओके. कैपिटलाइजेशन, ईयर ऑफ प्लेस इन सर्विस. सही है. पुट इन यूज मतलब सर वही होगा ना, इंस्टॉलेशन? हाँ, इंस्टॉलेशन नहीं, पुट इन यूज मतलब सर्विस कब स्टार्ट हुआ? सबसे कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया गया. ऑपरेशन स्टार्ट हो, कमर्शियल ऑपरेशन. ओके. So beyond the time of erection and commissioning, erection commissioning खत्म होने के बाद commercially operation कब से start हुआ, वहां से. ओके. ओके. और इसका जैसे कि कोई मशीन का सर्विस लाइफ रहता है कि इतने आवर्स, तो वो पैरामीटर नहीं रहता क्या उसमें? सर ये नंबर हम ऑफ वर्किंग आवर्स. वी आर कैलकुलेटिंग द एज. सही है. एज कितनी हुई है. अगर किसी एसेट की एज इन आवर कैलकुलेट होती है तो दैट वी विल मेजर इन द आवर. जैसे भाई हमारा प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का जो बल्ब है, प्रोजेक्टर की एज कैसे 5 साल 6 साल ऐसे मेजर नहीं होती. उसकी एज मेजर होती है कितने आवर चला. सही है. वैसे ही नॉर्मली जब कार की बात की आती है तो कार में कितना किलोमीटर चली उसके बेसिस पे उसकी कंडीशन या वैल्यू डिसाइड किया जाता है. जैसे भाई 5 साल में 5 किलोमीटर चली, सही है, या 5 साल में 1 लाख किलोमीटर चली, तो दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आएगा. सो एसेट टू एसेट नॉर्मली जो एज मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ द ईयर या इन टर्म्स ऑफ द यूजेज. यूजेज मतलब ये आवर या किलोमीटर जो भी है. नंबर ऑफ प्रिंट आउट, प्रिंटर की एज मेजर करने के लिए. अगर स्कैनिंग मशीन है तो नंबर ऑफ स्कैनिंग कितने हुए हैं और टोटल स्कैनिंग कितने हो सकते हैं उसके बेसिस पे.
Now, what is the effective age? Anyone? Depend upon the maintenance. Okay. It is the apparent age of the property in comparison with the new property of like kind. The age indicated by the actual conditions of the properties. Okay. So effective age, it is based on the actual conditions of the property or say efficiency of a property. दो machines है. Okay, दोनों भी परचेज किए थे 2021, आज 5 साल हो गए हैं. एक मशीन को 5 साल में कभी भी रिपेयर एंड मेंटेन नहीं किया गया है, दूसरे को हर क्वार्टर में रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया जाता है, उसके ऑयलिंग किए जाते थे, उसके अगर नॉर्मल पार्ट्स वेयर एंड टेयर हो गए तो उसे रिप्लेस किया जाता था. तो 5 साल के बाद जो पहला मशीन है उसकी फिजिकल डिटोरेशन बहुत है, उसकी वर्क एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई है, जबकि जो मशीनरी को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता था उसकी एफिशिएंसी अभी ऐसी ही जैसे 1 साल पहले मशीनरी खरीदा हो. सो दैट इज अ इफेक्टिव एज indicated by the actual conditions of a property compared to a new one. Okay. So while estimating the effective age, the valuer consider effect of overhauling, rebuilding, and above average or below average maintenance may have had no properties current conditions. If property has received regular overhaul, its effective will be normally less than the chronological age. Chronological age मतलब actual age, this age. 5 साल पुरानी प्रॉपर्टी का इफेक्टिव एज बेस्ड ऑन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2 साल हो सकता है. लाइफ machinery की we can identify there is a 3 life. One, it is a useful life. Okay. Is a physical life usually estimated in terms of the years new property actually used before it retired from the services. Machinery कब तक working conditions में रहेगी, it is useful life. कब तक सर्विस देगी before a retired मतलब out of use, there is a no utility now, प्रोडक्शंस खत्म हो चुका. सेम इकोनॉमिक लाइफ. इकोनॉमिक का लाइफ का मतलब क्या होता है? Stated in a number of years that new property may be a profitable use for the purpose was intended. Asset is generating profitable use. Economic life. सही है. तो पहले कोई भी एसेट की इकोनॉमिक लाइफ खत्म होती है, फिर यूजफुल लाइफ स्टार्ट होती है, फिर यूजफुल लाइफ खत्म होती है, फिर फिजिकल लाइफ बचती है, एंड वंस अपॉन पूरा डिटोरेट हो जाता है तो उसकी फिजिकल लाइफ भी खत्म हो जाती है. So what do you mean by the physical life? This is an estimated period, usually stated number of the years. The new property will be physically endured before it fatigues or deteriorates unusable conditions primarily from the physical causes without condition, considering possibility of earlier retirements due to the functional or economical obsolescence. तो जब तक फिजिकली एसेट है वो पूरी डिटोरेट नहीं हो सकती, purely by the physical conditions, not for the any types of obsolescence, is called the physical life. Okay. So economic life, useful life, physical life. Okay. A balanced economic life, balanced useful life. So when we are making the inspections, okay, कितने साल तक जो
एसेट है इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करती रहेगी, इट इज कॉल्ड द बैलेंस इकोनॉमिक लाइफ। या कितने साल तक आगे एसेट अवेलेबल फॉर यूज रहेगी, इट इज कॉल्ड द बैलेंस यूजफुल लाइफ। एनी डाउट? किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना हो? एज, इफेक्टिव एज, यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, फिजिकल लाइफ। Sir, one question. For this life, be it useful life or economic life or physical life, I mean, this preventive maintenance factor should come into the question, right? Always. Subject to kind of thing. Always. Okay. Okay. Now, what is the practice? Theory says always you have to use. जब भी आप वैल्यूएशन के लिए डेप्रिसिएशन, you have to use effective age and balance life, balance economic life or balance useful life for a calculation of the depreciation. Okay. But in a practice, what we are doing, we are taking care of the age instead of physical effective age, and we are taking care of the useful life or economic life for the calculation. मतलब एक मशीन है, ओके, जैसे बॉयलर है तो उसकी यूजफुल लाइफ 15 साल, एज कितनी हुई है 7 साल, तो बैलेंस लाइफ कितनी 8 साल। Okay? We are never going to find out the effective age based on the actual conditions or production efficiency that we have to take care. That's why हमने मैक्रो आइडेंटिफिकेशन और माइक्रो आइडेंटिफिकेशन में भी पढ़ा कि you have to check the क्या records of a Okay. repair and maintenance. Maintenance. अब आप record of the repair and maintenance पढ़ोगे, देखोगे कितनी कॉस्ट है या कितनी कॉस्ट अलोकेट की है, then you can judge कि भाई इफेक्टिव एज क्या हो सकती है या बैलेंस इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुल लाइफ क्या हो सकती है। Excuse me, sir. I have a बोलिए। question. Sir, actually, I come up across one valuation requirement from bankers. Actually, the unit is manufacturers of radiators, transformer radiators. The unit was installed almost 13 years before, and the age of machinery, I mean, useful life of the machinery certified by OEM is 16 years. It is almost only balance is only 3 years is there, sir. But still the machinery is in a very good condition, and the performance is they have certified also. OEM certified that they are performing as on date to the same of new machinery. There is no drop in performance of the machinery efficiency. I mean, putting it very clear, its efficiency is not dropped. Still, it is giving the same output, same amount of this thing. In that case, should we depreciate it to based on our general calculations, or we should go by economic life? Because if we see in income approach also, it is First, effective age. Second, balance economic life. No, balance economic life, how we can predict, sir? Sir, you have मतलब आपने ही बताया कि ओएम ने जस्टिफाई किया है ना गुड कंडीशंस और इतने साल तक चलेगी। नहीं, कितने साल तक चलेगा वो नहीं डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं वो क्या। after doing performance test, he is certifying the efficiency as on date only, but he is not certifying any future life. So if they are not certifying any the future life, then balance life can be a judgment based on the एक thing, you have to check the product life cycle, and second, यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था,
फंक्शनल ऑब्सोलेशन मतलब जनरेशंस ऑफ मशीनरी, जो अवेलेबल मशीनरी है इट इज गुड इनफ, बराबर, अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट उसके कंपेयर में जो नए मशीनरी आ रहे हैं एडवांस मशीनरी, उसका लाइफ स्टेटस क्या है? 16 years is sir. नहीं नहीं, जो नए एडवांस मशीनरी आ रहे हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। हाँ हाँ वही है सर, वही हम कहा अभी नो नया इक्विपमेंट जो अभी दे रहे हैं ना वो same equipment of a new one, if we ask for a quotation, he is certifying that the life is 16 years. And there is only technological upgradation is only on electronic side. Machinery इलेक्ट्रॉनिक wise साइड, or हाँ सही है। सो जो बैलेंस लाइफ होगी दैट विल बी इक्वल टू, मतलब जो टोटल लाइफ आज कंसीडर करोगे इट इज फॉर द न्यू मशीनरी जो वो ओएम में कर रहे हैं, इफेक्टिव एज कैलकुलेट करो एंड टेक अ ओएम लाइफ, तो आपकी बैलेंस लाइफ बनेगी। sir, can you share any such calculation how to calculate effective life? Because I am unable to इट इज draw it अवेलेबल on. इन द वन ऑफ द बुक दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइब्रेरी। सही है, अच्छा, okay, sir. आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, एक बुक है, मैं नाम भूल गया, बट फंडामेंटल ऑफ अप्राइजिंग इक्विपमेंट एंड मशीनरी। Oh, okay, sir. Thank you. Yeah, any more questions? फैक्टर अफेक्टिंग द लाइफ। ओके, यहाँ पे आपको वो चीज पता चलेगी भाई, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एसेट्स। तो आपकी एसेट मटेरियल बेस है या टेक्नोलॉजिकल बेस है? जब एसेट टेक्नोलॉजिकल बेस होती है तो यू हैव टू चेक दिस रिवोल्यूशंस ऑफ द टेक्नोलॉजी या जनरेशंस ऑफ द मशीन्स, कितने साल में नया मशीन्स आ जाता है जो पुराने मशीन्स को एब्सोल्यूट कर देता है। सही है, based on based on physical conditions, that is a unusual sound, vibration, rusting, cracking। अगर फिजिकल कंडीशंस खराब है उसके इस पे अफेक्ट लाइफ करेगी, टोटल लाइफ। बेस्ड ऑन द मेंटेनेंस, दैट मे बी अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और शेड्यूल मेंटेनेंस। बेस्ड ऑन द यूजेज, नंबर ऑफ शिफ्ट, अगर 3 शिफ्ट में चलती है तो मशीन की लाइफ बट ऑब्वियसली shorter than the machine will be same machine used for the single shift। Finance resources available, that is the availability of the raw materials, and market trend, that is based on the life cycles, demand and supply of the product। प्रोडक्ट कब तक सेल आउट करता रहेगा उसके बेसिस पे यू कैन अफेक्ट द लाइफ, लाइफ का आप जजमेंट ले सकते हो। देन some accounting terminology. One is a historical cost, another is a acquisition cost। Okay. What do you mean by the historical cost? The purchase price paid for the initial time acquiring the asset plus additional made subsequent। जब एसेट फर्स्ट टाइम न्यूली परचेज की गई थी, फर्स्ट टाइम एसेट परचेज की गई थी न्यूली, तो एसेट खरीद परचेस करने के लिए और उसके बाद में उसको पुट इन यूज करने के लिए जो भी खर्चा हुआ इट इज कॉल्ड द हिस्टोरिकल कॉस्ट। सही है। एक्विजिशन कॉस्ट या मेनी टाइम्स ओरिजिनल कॉस्ट किसे बोलते हैं? इफ एसेट इज परचेज्ड एज अ सेकंड हैंड, ओके, एज अ सेकंड हैंड बाय सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ओनर एनी, सो वो परचेज करने के लिए कितना प्राइस पे किया गया था, इट इज कॉल्ड द एक्विजिशन कॉस्ट। बुक कॉस्ट, सो कुछ कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में इसीलिए एज ए एक्सपेंस ट्रीट किए जाते हैं टू गेट द टैक्स एडवांटेज, जैसे डेप्रिसिएशन।
In books of account, depreciation is treated as an expense, though owner is not paying a single penny to anyone. क्यों? To avail the tax gain, to avail the tax advantage. Okay. Book cost. Written down value. So historical cost minus total depreciation calculated using the written down value method will give you a written down value. Okay. Historical cost minus total depreciation calculating using the WDV method will give you a written down value. Many times this written down value is also known as a book value or net. Same terminology, net book value. So historical cost minus total accumulated depreciation is equal to net book value. मतलब आपने depreciation किसी भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से कैलकुलेट किया है, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसे नेट बुक वैल्यू बोला जा सकता है. ओके, सो मैनी टर्म्स जस्ट लाइक नेट ब्लॉक, बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, ये सारे सिमिलर टर्मिनोलॉजीज है. ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये सारे टर्मिनोलॉजी का एक ही मतलब होता है. या एनी डाउट किसी को भी यहां पर, रादर देन एनी, किसी भी पॉइंट में? या आइटम शुड बी ट्रीटेड एज अ बिल्डिंग. हाँ बोलिए. Sir, acquisition cost, difference between historical and acquisition cost. Historical cost means the cost exclusively when it is newly purchased. Exclusively newly purchased. But whereas acquisition cost is it considered Acquisition cost, if it is a purchase price paid by the first rather than any first owner. It means it is second, third, fourth, like that. हाँ, कोई भी सही है. Suppose I think the visible. Yes, yes. Okay. Lathe machine as a new purchase at rupees, ये बहुत सिंपल है, 10,000. Okay, so it is called a historical cost. Okay, Mr. A purchased lathe machine as a new in 2020. अब इसी मशीन ने को मिस्टर ए सेल टू मिस्टर बी at rupees 8,000 in 22. So for Mr. B जो 8,000 है, it is called the acquisition cost और ओरिजिनल कॉस्ट. ये जब भी मिस्टर ए के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट. अब इसी को मिस्टर बी, सही है, Mr. B sell to Mr. C at 6,000 in 2023. So 6,000 is the acquisition cost for Mr. C. Okay. So rather than first owner, second, third, fourth,
ऑनर ने मशीन एक्वायर करने के लिए जो भी प्राइस पेड की है, इट इज कॉल्ड द ओरिजिनल कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट। सही है। फर्स्ट ऑनर ने जब भी एसेट एज ए न्यू परचेज किया है, इट इज कॉल्ड द हिस्टोरिकल कॉस्ट। बाकी के सारे एक्विजिशन कॉस्ट फॉर द परचेजर, 8,000 फॉर मिस्टर बी, 6,000 फॉर मिस्टर सी। फर्दर ट्रांजेक्शन होता तो फिर मिस्टर डी के लिए, मिस्टर ई के लिए भी। For depreciation calculation, what we have to do? ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट के टर्मिनोलॉजी से। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा, इट इज बेस्ड ऑन द परचेज प्राइस ओनली। सही है। हमारे वैल्यूएशंस में तो वी आर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन ऑन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रिप्रोडक्शन कॉस्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस परचेज प्राइस है, दैट मे बी अ हिस्टोरिकल कॉस्ट और दैट मे बी अ एक्विजिशन कॉस्ट, उस पे ही डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाएगा। बट वैल्यूअर ऐसा नहीं करेंगे। वैल्यूअर विल प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन ऑन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रिप्रोडक्शन कॉस्ट। Yeah. Any idea what you mean by the replacement cost and reproduction cost? हाँ, तो बोलिए। Reproduction means exactly the cost of the machine which is made new, I mean replica of the original machine. So whatever materials, whatever labor costs and all those things individually will take, and they will sum up all those things and to make the replica of the subject machine. That is the cost of the reproduction. What is the replacement cost? Replacement cost means suppose subject machine is there, we need similar utilization of the machine. Maybe it may be technically it may be advanced, but it is available in the market. So the price of the amount required to create similar asset having a equivalent utility, it is a replacement cost. Amount required to create duplicate or replica of the asset is called the reproduction cost. Okay. What do you mean by the cost? Cost that is paid for acquiring that asset. That production cost, that is. But what do you mean by the cost? Amount required to produce. The monitor. Amount in terms of the money required to create an asset or property. सही है। मतलब और टू प्रोड्यूस द क्रिएट एन एसेट और द प्रॉपर्टीज, जितना पैसा उसको बनाने में खर्चा होगा। व्हाट यू मीन बाय द प्राइस? Price, the rate at which the asset buyer is willing to pay. Buyer is willing to pay. Willing to pay, but consumer, yes. ओके, मेरी स्क्रीन पे रामचंद्र पहले है, सॉरी रामचरित्र। बोलिए आप। यस सर। बोलिए। कॉस्ट या प्राइस? प्राइस बोलिए। प्राइस सर, suppose consumer wants willing to pay the price, that is called the cost price. Okay. Second one, और कोई? Price tag of the seller. Okay. Anyone else? कोई और? नहीं, सब सही है, ऐसा नहीं है। So cost is the cost of production or reproduction, whereas price is the value I am ready to pay. नहीं, price is not value. That is the amount I am prepared to pay, and would include the profit of the seller as well. Okay. Right. Okay. So price is the listed one, listed in the market. The amount at which transactions between a willing seller and willing buyer, it's called the price. Right. Okay. And
we can generalize the price equal to cost plus or minus profit or loss. सही है? It is not always के price equal to cost plus profit. Price may be as many times cost plus or minus loss or profit. सही है? तो price it is at transaction side, जहां पे transaction होता है. Cost it is at creating side, manufacture side, production side. Yeah. Any more question? किसी को है? Otherwise we discuss next topic. Asset or items to be treated as a building or treated as a plant and machinery. Okay. First, item that is not treated as a plant. So warehouse constructed by the SSE and hired for the storage purpose. Okay. So warehouse is not considered as a plant. Electrical installations in case of the bank companies, electrical installation is not considered as a plant. Water storage tank constructed by the person in connection of the business supplying water to farmer. Water storage tank used to supply water to the farmer, not considered as a plant. Part of the vehicle, such a body of the vehicle is not considered as a plant. Road construction within a factory premises is not considered as a plant. Fencing or compound wall around the factory premises is not considered as a plant. Okay. ये सारे plant में consider नहीं होते. Same, what is a consider as a plant? So building with insulated wall as a freezing chambers of the air conditioned plant of a cold storage. Entire cold storage can be considered as a plant with a wall or with a building. Okay. Thermocol insulations in a cold storage considered as a plant, not a building materials. Air conditioned equipment installed in a safe deposit vault of a bank. Safe deposit vault is considered as a plant. Air condition in a safe deposit vault are also considered as a plant. Cooling coil installed by the sugar mill, it is a plant. इसमें कुछ doubt नहीं है. Pole, cables, conductors, switchboards for the electric distribution is considered as a plant. Coiled up, cast iron, winding, gearing, rope, it is considered as a plant. Safe deposit vault of a bank considered as a plant. Sanitary items and pipe fitting in a hotel only. In a hotel. Sanitary items and pipelines, hotel key considered as a plant. Loose tools which are directly connected with a running of the SS's factory, matlab mandatory spares are considered as a plant. Mandatory spares or spares which are the free of cost with the machinery are considered as a plant. Know-how in form of the printed literatures, technical informations under agreements considered as a plant. Technical know-how in form of the manufacturing design, specimen drawing, chart, plan, processing, data, all literatures considered as a plant. RCC chimney or boiler considered as a plant. Water treatment plant, effluent treatment plant, sewage treatment plant are considered as a plant. Fencing around the machine for the protections of the machine considered as a plant. Okay. Any supporting structure to the machine considered as a plant. MS supporting structure of the boiler is considered as a plant. Any foundation of the machinery slide is not considered as a plant. हाँ ये सब स्लाइड में नहीं लिखा है. सही है. ओके ये नहीं लिखा है. बट हमने डिस्कस किया कि भाई फाउंडेशन कंसिडर एज ए प्लांट, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इज कंसिडर एज ए प्लांट. सही है. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इफ्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट कंसिडर एज ए प्लांट.
उसे बिल्डिंग ट्रीट नहीं किया जाता। ओके, या सो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। तो एंड ऑफ द इंस्पेक्शन जब भी वैल्यूएशन करोगे तो आपके दिमाग में ये भी क्लियर होना चाहिए कि एज ए वैल्यूअर ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी किसको प्लांट कंसीडर करना है और किसको प्लांट कंसीडर नहीं करना है। देखिए, जब तक आपको लिमिटेशंस और बाउंड्रीज अपने फील्ड की, अपने एसेट क्लास की नहीं पता होंगी, तब तक आपसे गलती हो सकती है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वैल्यूएशन रिपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई द मशीन। और जैसा सर ने आपको बताया, अगर आप इसको कंसीडर करके चलेंगे तो आपके गलती होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। यस सर। एनी क्वेश्चंस किसी को भी? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। आपने बोला एयर कंडीशनिंग मशीन इंस्टॉल्ड एयर कंडीशन इन बैंक safe safe deposit vault. vault. Yeah. It is being treated as a plant. If Ah. same air conditioning machinery is installed in an office, Is not considered as a plant and machinery. what is the difference, sir? Can you please explain, sir? Where it is used. Where it is used. Safe deposit vault, is it a plant? It is a plant as per the judgment of the court. Safe deposit vault. देखिए, Okay. मैं I am giving a one simple example. In a factory premises, there is a RCT tank used for the water storage, and water is utilized as a drinking water to worker. Okay, उसके पास में दूसरी एक टैंक है. It is also used for the water storage, and this water is used for the manufacturing process. जो टंकी आरसीसी की फॉर ड्रिंकिंग वाटर यूज होती है ना, इट इज नॉट कंसिडर एज अ प्लांट, इट इज कंसिडर एज अ बिल्डिंग. और बाजू वाली टंकी जहां पानी ही भरा जाता है बट वाटर इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सो दिस टैंक विल बी कंसिडर एज अ प्लांट. सही है, वेयर इट इज यूज्ड. एनी डाउट? सर मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ बोलिए. सर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट is इट इज considered अ as प्लांट एंड मशीनरी. okay, whether it is kept in place where Kept in practice, devices were premises, or anywhere. Okay. Some of the machineries that is required for the essential operations of the entire plant and machineries, it's considered as a plant and machine. Fire safety equipments, it is a non-productive assets. मगर ये फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होते तो क्या आपका प्लांट स्टैट्यूटरी लीगल वे से चल सकता था? नहीं चल सकता था. सही है. तो हमने वो स्टैट्यूटरी मेजर्स भी डिस्कस किए. तो स्टैट्यूटरी मेजर्स में ये सारे कि भाई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाओगे तो ही आपको चार्जिंग की प्रोसेस परमिशन दी जाएगी. चार्जिंग मतलब आपके मशीनरी इलेक्ट्रीफाई कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो. Sir, vaults and air condition used in hotel, that also in the plant and machinery, right? Condition in a plant and air condition or HVAC system used in the hotel is considered in the plant. सही है. बट Yes, sir. होटल के लिए एक ही चीज है कि भाई सैनिटरी आइटम्स एंड पाइपलाइंस आर कंसिडर एज ए प्लांट. जबकि आपके रेसिडेंस बिल्डिंग में यही सैनिटरी आइटम्स एंड पाइपलाइंस आर कंसिडर एज ए बिल्डिंग, नॉट अ प्लांट. What is the logic, sir? They are generating revenues. Commercial use. purpose. ओके. और ये सारे जो है ना, मतलब जो भी हमने पढ़े, इट इज बेस्ड ऑन द कोर्ट जजमेंट क्लासिफाई किए गए हैं. सही है. हाँ हाँ. ओके, और कोई क्वेश्चन? क्या हुआ? इन्वेंट्री और स्पेयर पार्ट. Inventory and spare part are not considered as a plant and machinery. Mandatory spares or
the spare which is come free of cost with the purchase of the machinery are considered as a plant and machinery. So general spares are not considered as a plant and machinery. Yeah, Mr. Seem. Oh, हाँ बोलिए. Audible. sir, inventory. हाँ ऑडेबल. आसिम. Is not cutting light. Wait, आप आसिम जी आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है. Am I clear now? हाँ बोलिए, ट्राई करता हूँ मैं. मेरा पॉइंट है कि फॉर लाइफ machinery, suppose life is 15 years and it has gone for 3 years, then it is it is in shutdown condition for 10 years and no data also available for production and type of product. How do you do it? Based on the physical conditions and product cycles of a product and फंक्शनल ऑब्जर्वेशंस के बेस पे. देखिए मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं. मेरे पास टिप टॉप मशीन है, हु इज अ मेकिंग अ मास्क, सॉरी नॉट हु इज अ, विच इज अ मेकिंग अ मास्क. कोरोना में हमने बहुत मास्क पहना था. दैट आई वाज परचेज्ड इन द 2018. ओके, इसकी लाइफ या बैलेंस लाइफ क्या है? नहीं सर, मेरा पॉइंट थोड़ा दूसरा था. या आप परचेज करोगे तो कैसे परचेज करोगे? तो सर मेरा पॉइंट दूसरा था, वो ऑब्जर्वेंस नहीं है बट फैक्ट्री बंद है ड्यू टू IBBI. सर यही सेम चीज है. मैं आपको समझाता हूँ, आप बताइए. मैंने मास्क मशीन खरीदा था 2019 में, 19 में. आज उसकी बैलेंस लाइफ क्या है, या उसकी टोटल लाइफ क्या है आज की दिन में? बैलेंस लाइफ 0 है. और लाइफ अदर यूज के लिए कर सकते हैं. सर मास्क ही बनाते हैं, कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है. समझे? अब आपका जो मशीन, आप बता रहे हो कि आपका मशीन 15 साल की लाइफ है, 3 साल चला फिर 10 साल से बंद है. सही है. तो एक तो आपका मशीन जो प्रोडक्ट बनाता था वो प्रोडक्ट अभी चल रहा है मार्केट में कि नहीं. सही है. और दूसरी चीज, आपके मशीन में मतलब आज 3 और 10 13 साल हो गए हैं. 13 साल में जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन था, उस हिसाब से मशीन्स के जो नए मॉडल्स है उसके कंपेयर में ये मशीन आज मार्केट में चलेगा कि नहीं? समझे सर आप? Yes sir. कई बार ऐसा हो सकता है कि 10 साल की या 13 साल पुराना अब मार्केट में चलने लायक बचा भी ना हो. अगर वो सर्विसेबल है, यूज भी है, फिर भी जो उसका प्रोडक्शन निकल रहा है इज नॉट इक्वल. That means you have to apply my own judgment, right? हाँ, नॉट ओन जजमेंट, आपको ये स्टडी करनी पड़ेगी. हम जब कई बार ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वैल्यूएशंस करते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आते हैं कि भाई मशीनरी परचेज किया था सेकंड हैंड और ओरिजिनली वो बिल्ड किया था इन 1985 और कुछ भी मतलब 40 साल मशीन के हो गए, रिबिल्ड हो गया और ये सब. तो अब बैलेंस लाइफ क्या है? तो वो देखने के लिए भाई आज की डेट में जो मशीनरी लेटेस्ट अवेलेबल है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं और कितना इकोनॉमिक प्रोड्यूस करती है, उस बेसिस पे वी आर एज्यूमिंग द बैलेंस लाइफ कि अगले कितने साल तक ये इकोनॉमिक यूज प्रोडक्टिव निकाल सकती है. सही है. तो इट्स रिक्वायर्ड मैनी टाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस रादर देन जस्ट गोइंग विथ और डीलिंग विथ अ नंबर कि भाई 15 साल है, 3 साल यूज हुआ है, 10 साल यूज नहीं हुआ है, तो बैलेंस लाइफ में बी इन फॉर्म ऑफ द 2, 3 और 5 years. जब आप डेप्रिशिएशन करते हो देन अगेन 10 साल तक मशीनरी पड़ी रही है तो कॉस्ट टू क्योर ऑल्सो मैटर. कॉस्ट टू क्योर मतलब 10 साल पड़ी रहेगी और उसके आप प्लग इन करोगे तो मशीनरी चालू नहीं हो जाएगी. सही है. यू मे रिक्वायर सम एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके के बाद भी
his machine is capable to produce sufficient or economic output or not is a matter. Okay, हमने अभी नहीं, मतलब इस take a time. Okay, bias tires and radial tires के दो types हैं. So we observed one line. It's a bias tire के कुछ machinery को modified करके convert into the radial line machines. Okay, अब radial tires आउटपुट तो निकलना स्टार्ट हो गया था, बट दो मशीनरी वाज कन्वर्टेड फ्रॉम द बायस टायर टू रेडियल टायर्स. उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट था बहुत आ रहा था, और उसका जो ब्रेकडाउन था वो भी बहुत आ रहा था. तो जो प्रोडक्शन निकल रहा था ना, इज व्हाट नॉट मार्केटेबल. मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 300 रुपये आ रहा है, और मेरा जो पीयर्स है वो 300 रुपया में टायर्स बेच रहा है. तो अगर मैं टायर 350 में बेचता हूं तो मार्केट में चलेगा नहीं कोई. सही है. तो ये सारे कंसेप्ट हमें ध्यान में रखते. देखिए, वैल्यूएशन इज नॉट और वैल्यू इज नॉट अ टेक्निकल कंसेप्ट, इज अ इकोनॉमिकल कंसेप्ट. किसी भी एसेट की वैल्यू कब है? एसेट अवेलेबल है तब है. एनीवन? किसी भी एसेट की वैल्यू कब है? जब मार्केट में उसका प्रोडक्ट का डिमांड है, then only it is. सही है. इन अदर वर्ड्स आई से, if asset is capable to generate a economic benefit, then there is a value of a asset. अगर एसेट अवेलेबल है और उसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, तो एसेट हैज ओनली स्क्रैप. सही है. सिंपल एग्जांपल मैं बहुत बार देता हूं. 50 रुपए की एसेट इज जनरेटिंग 500 रुपीज. 50 रुपए की एसेट 500 रुपीज जनरेट करती है पर एनम. और दूसरे केस में 500 रुपीज की एसेट 50 रुपीज जनरेट करते पर एनम. तो आप बताइए, 50 वाले रुपीज वाली एसेट को आप कितने में खरीदना चाहोगे, और 500 रुपीज वाली एसेट को आप कितने में खरीदना चाहोगे? 500 वाला ज्यादा वैल्यू देंगे. सही है. मतलब जो 50 रुपए की एसेट 500 रुपीज जनरेट करती है, वो आप 50 की जगह 100, 200, 300 भी देने के लिए रेडी होंगे आप, बिकॉज इट इज जनरेटिंग द 500 रुपीज. जबकि 500 रुपीज की एसेट विच इज जनरेटिंग द 50 रुपीज पर एनम ओनली, उसके लिए यू विल नेवर पे 400, 300, 200 और इवन 100. You will pay a 40, 30, 25 like this only. Okay. So that is up. Yeah. Any doubt? Any questions? किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो we can discuss. Okay. We are going a short break. 10 मिनट का टी ब्रेक करते हैं. Then we will start the second chapter. Okay. Anyone? Short break. 10 मिनट का. It is a 15 को वापस आ जाएंगे. बंसल सर 3:15 को वापस आ जाएंगे. Okay, sir. So friends, let's take a short tea break for 10 minutes. We will rejoin sharp at 3:50. 3:50 पे दोबारा आएंगे. Till then, you can switch off your screens. Okay. सर आज एसएपी का भी क्लास था, वो ये कंबाइन है क्या दोनों? Sum of just like a product, by capacity, capacity, financial ratios, study of the process layout and all the things. So in this chapter, we will discuss this terminology. So first is the capacity. Okay. So the terms in the capacity, one is the install capacity, that is the actual capacity or capacity utilizations, and the license capacity. So what do you mean by the install capacity? So it is the maximum
productive capacity according to the manufacturer specification of the plant machinery or equipments. So, as mentioned by the manufacturer, okay, you can take up to this much output. But due to the many reasons, just like due to the repair and maintenance, due to the off days, we are not achieving the installed capacity. Instead of we are achieving the something less than the installed capacity. That is called the actual or practical capacity. It is the maximum productive capacity of plant reduced by the predictable and unavoidable factors of the interruptions penetrating into the internal causes. So 100 ton per day ki against में can take a 80 or 90. This may be due to the interruptions due to the time loss for the preventive maintenance, repair, normal delay, weekly off day, etc. And the license capacity means it is a production capacity of a plant for which license has been issued by the appropriate authorities. As a part of the statutory measures, your license capacity come into the picture. Okay. So installed capacity, capacity utilization, or say practical capacity, and license capacity as a valuer we have to verify while valuing the plant and machineries. Availability of the raw materials. Okay. So raw material can be explained as a substance of the material used in a manufacturing or primary productions of the goods. Okay. So we have to check limited or finance raw materials. Okay. Then limited period of the contract for the supply of raw materials. How raw materials available to the subject companies depend on the nature and climate of the raw materials, just like sugar cane industries, just like cotton textile, which are the depend on the natures. Depend on the sister concerns and other companies for the raw materials. ओके अगर कोई सिस्टम कंसर्न कंपनी है अदर कंपनी पे फुल्ली डिपेंडेंट है तो अगर सिस्टम कंपनी या अदर कंपनी शटडाउन में आती है ड्यू टू द एनी रीजंस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल विल बी इंपैक्टेड एंड सेम टाइम import of raw materials and government policies. If any companies depend on the fully of imported raw materials, so government policies we have to study it, how it is available. Yeah, there is a restrictions or barrier or threat for the import of the raw materials. So we have to study availability of raw materials and how it will be available to the companies. Then level of technology. Okay. अभी जो एक क्वेश्चन था उसी के रिलेटेड. Which generations of the machinery are installed for the productions and what is a current availability? A dramatic change brought about the relative quick by introducing some new technology over the old machinery. Okay. So we are identify our the 4 I's. जैसे पहले सारे first industrial revolution में all the production was started with the water and steam. After the invention of the electricity, machinery start to operate with the electricities. After the coming the electronics in the picture, programmable logic controls and electrons based machinery come into the pictures. And nowadays in a 4I, digital manufacturing with the objective of the virtual objects and process by information technology, advanced machinery available. Nowadays, we are shifting to the 5I, where more automations are available. So which types of, which generations of the machines are available at the site? Because generation of the machinery affect the marketability, and marketability after all affect is the value. Okay.
Let's take the one simple example for the production of the car. मतलब how car was there means first the car was operated by the steam, then it's come with the gasoline engine. So those machinery was building the car with the steam engine become obsolete at the time of gasoline engine. Same time, when the diesel engine come into the picture, all the machinery related to the gasoline engine production facilities become outdated. Year on year, due to the technologically increase, advanced electronics come into the picture, petrols and hybrid cars come into the picture, older technology productions, yeah, technology machinery become obsolete. Okay. Nowadays, we are going toward the hydrogen fuels and electric cars. If electric car get the fully successful or hydrogen car get fully successful, so today's whatever the petrol or diesel car production machinery may become a fully obsolete. Okay, so as a valuer, we have to examine okay, which types of technological generation is employed for the productions, what is the current available technologies, and impact on the value as a functional observations. Okay, valuation as a part, fraction as a whole. Okay, valuation whole matlab property entire rights of bundle. Okay, पूरी एक प्रॉपर्टी जैसे मैं पावर प्लांट का वैल्यूएशन कर रहा हूं तो पावर प्लांट का एंटायर पावर प्लांट की वैल्यू सेम वैल्यू इन अ पार्ट मीन्स अ इंटीग्रेटेड विद द होल एंड डिपेंडेंट अपॉन द होल किसी सेक्शन का उसका एंड फ्रैक्शन मतलब इंडिविजुअल मशीनरी फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द होल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द होल. देखिए पावर का वैल्यू 100 रुपया हो सकता है बट उसके बॉयलर का वैल्यू नॉट मे बी 5 रुपीज और 10 रुपीज क्योंकि बॉयलर की अपनी खुद की कोई यूटिलिटी नहीं है और पावर प्लांट का जो बॉयलर है वो सेपरेटली सेल आउट नहीं हो सकता. इट लूज इज मार्केटेबली इंडिपेंडेंटली बट इफ वी कम इन द कलेक्टिविटी एज ए होल पावर प्लांट इज एज ए वैल्यू. जैसे कोई वर्कशॉप मशीनरी है या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है जहां पे 10-15 लेथ मशीन है, 10-15 ड्रिलिंग मशीन है, प्लानिंग मशीन है, ओके सीएनसी मशीन है. ऐसे में क्या होता है हियर देयर इज इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ द मशीन. अगर आप एक लेथ मशीन बेचना चाहोगे तो इट नॉट लूज इज मार्केटेबिलिटीज. सही है. यहाँ पे इंडिविजुअल तो व्हेन वी आर वैल्यूइंग द एसेट हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि वैल्यू एज ए होल या वैल्यू एज ए फ्रैक्शन या वैल्यू एज ए पार्ट मैक्सिमाइज कहाँ हो सकती है. सही है. सो there's a value as a whole, value as a fraction and value as a part. Then relation to earning. हमने सिंपल बात बोली कि asset is generating the economic benefit then only it is asset. It has a value. But कितना economic benefit? तो it should be a up to the certain level. जैसे मैं 100 रुपया आज इन्वेस्ट करता हूं तो मैं चाहता हूं कि मुझे मिनिमम टू मिनिमम 7 to 8% रिटर्न मिलना चाहिए. अगर मुझे 7 to 8% रिटर्न नहीं मिलता है तो इट इज अ बेटर के लीव ऑफ द बिजनेस को मैं लिक्विडेट कर देता हूं. मतलब इफ आई एम नॉट गेटिंग द इनफ या लेस देन इट इज बेटर टू लिक्विडेट द इन्वेस्टमेंट. अगर मेरे को सफिशिएंट मतलब 6-7% से ज्यादा मिल रहा है देन ओनली एसेट हैज ओन वैल्यू. और अब क्या कि ड्यू टू यूजेज माय एसेटिंग इज लूजिंग दिस वैल्यू. सो व्हेन आई ओवरकम माय डे टू डे लॉसेस सो दैट्स वैल्यू ड्यू टू द intangible and goodwill's value.
सो जो एसेट ज्यादा पैसा कमा के देगी उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। एसेट 100 रुपए की हो या 200 रुपए की, अगर 100 रुपए की एसेट 1000 रुपया कमा के देगी है तो 100 रुपए वाली एसेट की वैल्यू 200, 300, 400, 500 हो सकती है। सही है। सो इट इज अ रिलेशनशिप अर्निंग एन एसेट। When I can do the valuation on the going concern, so if asset is generating sufficient return, then only I can do the value of a going concern. अगर एसेट सफिशिएंट रिटर्न नहीं जनरेट करती, देन आई कैन नॉट डू द वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द गोइंग कंसर्न। ओके। Terminologies: business economic viabilities and economic obsolescence. Two terminology. One is a economic viabilities. Second is a economic obsolescence. Both terminology are differ. देखिए, वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? टू चेक द एबिलिटी टू सर्वाइव। आगे फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। इकोनॉमिक वायबिलिटी मतलब चेक द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू सर्वाइव। फ्यूचर में ये कंपनी कैसा प्रॉफिट या लॉस करे। जबकि ऑब्सोलेशंस है, इट इज अ लॉस इन वैल्यू आइदर बाय फिजिकल डिटोरेशंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी और पेटेंट इन डिमांड और एनवायरमेंटल चेंजेस। ऑब्सोलेशंस है, इट इज अ लॉस इन अ वैल्यू। और इकोनॉमिकल ऑब्सोलेशंस का मतलब है लॉस इन अ वैल्यू, स्पेशली change in the supply or demand of the product produced by the assets। अगर एसेट से जो प्रोडक्ट बनती है उसी की डिमांड नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो इट इज कॉल्ड द इकोनॉमिकल ऑब्सोलेशंस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू हियर? Viability is a internal or external causes, while obsolescence is due to the external causes only। आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी में भी क्योरेबल, आप एडवर्टाइजमेंट या सेल बढ़ा के क्योर कर सकते हो, वाइल एक्सटर्नल ऑब्सोलेशंस मेजरली इनक्योरेबल। इट इज इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू, पैसे के बारे में बात होती है वायबिलिटी में, वाइल इट इज इन टर्म ऑफ अ लॉस इन अ वैल्यू। आप वायबिलिटी फाइंड करते हो बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड एजम्पशंस, जबकि आपको यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्सोलेशंस में हैव टू फाइंड द फैक्ट कि भाई इकोनॉमिकल ऑब्सोलेशंस क्यों है। आप इकोनॉमिक वायबिलिटी फाइंड कर सकते हो फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लांट, जबकि इकोनॉमिक ऑब्सोलेशंस ऑलवेज वी आर फाइंडिंग इन द एग्जिस्टिंग प्लांट, पुराने प्लांट। नए प्लांट में इकोनॉमिक ऑब्सोलेशंस जल्दी डिटेक्ट नहीं होते। सो वायबिलिटी इज बेस्ड ऑन द गैप एंड सप्लाई ऑफ द डिमांड। ओके, एंड आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी सफर है बिकॉज ऑफ देयर इज अ इकोनॉमिकल ऑब्सोलेशंस। ये हो सकता है कि देयर इज अ इकोनॉमिक ऑब्सोलेशंस दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग बाय द इकोनॉमिक वायबिलिटीज। ओके, सो टू टर्मिनोलॉजी, economic viabilities and economic of obsolescence। Viability means of financial performance to survive, जबकि obsolescence है, it is related to the word loss in a value। Yeah, any doubt, any questions किसी को पूछना है तो? Okay, then efficiency plant layout। Okay, plant layout and line of process। इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स चेक कि भाई प्लांट लेआउट का मतलब टेक्निक of locating different machinery and plant services with a factory so that greatest possible output of high quality as a lowest possible cost can be available। देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर
मैक्सिमम आउटपुट एट लोएस्ट कॉस्ट। आप मशीनरी एंड सर्विसेज को ऐसे इंस्टॉल कीजिए कि यू गेट द मैक्सिमम आउटपुट एट अ लोएस्ट कॉस्ट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड प्लांट लेआउट? तो एफिशिएंटली स्पेस यूटिलाइजेशन, जो भी स्पेस अवेलेबल है वो एफिशिएंट यूजेज। देयर इज अ ensuring a coordinations between man to machine, machine to machine and man to man. के फ्लेक्सिबिलिटी, आपको अगर प्लांट लेआउट चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। विजिबिलिटी, sufficient light should be there. Accessibility, anyone can easily reach out. Reduce discomfort, okay. Sunlight, air circulation sufficient must be there. Lower noise, economic to handling, minimum movements, okay, according to the statutory regulations, and prevention of the material and equipments. कोई मशीनरी एक दूसरे से डैमेज ना हो ड्यू टू द वाइब्रेशंस और नॉइज एनीथिंग एल्स, वैसे प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट का मतलब कि पुट और लोकेटिंग द मशीन्स एंड सर्विस इन सच ए वे यू गेट द मैक्सिमम आउटपुट एट लोएस्ट कॉस्ट। लेट्स टेक अ, so it is signify arrangement of the machines, work area, material handling equipment, transport and sorting, different material, product and tools, fixture, etc. Proper plant layout is one of the key of success of the plant factory and management. See why we have to look? Because if plant layout is a good, you get maximum output at lowest cost. Maximum output, lowest cost, मतलब economic factors become more stronger. To determine plant layout, it is based on the type of product, that is a shape, size, quality, etc. Type of process, that may be a technology employed, sequencing, etc. Volume of product, is a large, small, medium, etc. See, let's try to understand this point. Okay, there is a cement plant. अब cement plant के we are putting the 5 section by raw material procurement, material handling, process engineering, packing और marketing, ये departments है। सही है। जो raw material वाला है material procurement, वो raw material and packing material procure करता है। अब ये डिपार्टमेंट सिर्फ पैकिंग मटेरियल प्रोक्योर सही से नहीं करता है तो इट विल बी इम्पैक्ट ऑपरेशन ऑफ द एंटायर प्लांट। भाई जब तक प्लांट की इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी है तब तक प्रोडक्शन हो सकता है। रो मटेरियल पैकिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो वो डिस्पैच डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मार्केट में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। सही है। मतलब एक सेक्शन सही से काम नहीं करता है, इट कैन इम्पैक्ट द एंटायर प्रोसेस ऑफ द प्लांट। सीमेंट प्लांट में नॉर्मली रो मिल, कॉल मिल, प्रीहीटर, सीमेंट मिल, पावर मिल, अगर कॉल मिल इज वर्किंग एट 60% एफिशिएंसी, सभी दूसरे मिल को भी आपको 60% एफिशिएंसी पे चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही मशीनरी will not affect that, it will impact entire plant production. सही है। So this is a imbalance in the different production section and effect that as a valuer we have to studies. सही है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है तो इट विल बी इम्पैक्ट एंटायर सप्लाई चेन और प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। जब तक माल मतलब प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो जाता तब तक एसेट में जैसे नो इकोनॉमिक यूटिलिटीज। सही। तो रेवेन्यू जनरेट होगा तो ही एसेट की वैल्यू है, अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो एसेट की वैल्यू नहीं। ओके, या एनी डाउट, एनी क्वेश्चन?
let's go for the depreciation as per the income tax and as per the Company Act. Now, why there is a provision of the depreciation or which asset is a depreciable asset? तो जिस एसेट की लाइफ शॉर्ट लिमिटेड है आर द डेप्रिसिएबल एसेट, और जो एसेट की लाइफ अनलिमिटेड है इट इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट. So name the asset which has an unlimited life. कौन सी asset? Land is the only asset which has an unlimited life. So land is a undepreciable asset, while other all assets are the depreciable asset. Now depreciation in a books of account is treated as a expenses. Why? Because its value goes on decreasing now, so we have to procure the new machine, then this money will be utilized. So all the asset has a limited life. So when the life of an asset is over, you have to replace the asset, and for the replace the asset, you require the fund. Now, government to make a provision of this replacement, government allow to provide depreciation as expense. So when you are putting your depreciation as expense, so your not total net income will be reduced, and your tax liability reduce. And reduce tax liability, government suggests, it is an advice. Okay? Whenever you require fund from for the replacement of your asset, you can utilize these funds. Okay. So what do you mean by the depreciation? So depreciation is a systematic allocation of a depreciable amount of asset over its useful life. Okay, useful life we have studied. What is a depreciable amount? So it is a cost of the asset, replacement cost or a historical cost, and substituted other cost less is residual value. मतलब cost में से आप residual value reduce करोगे, it is called the depreciable amount. What is a residual value? Okay, so it is an estimated amount of the entity that would be currently obtained from the disposal of the asset. Asset को जब आप sell करोगे, कब sell करोगे? After deducting the estimated cost of the disposal, जो cost of disposal आएगा, if the asset already of the age and condition accepted at the end of the useful life. मतलब जब एसेट की यूजफुल लाइफ सेल हो जाएगी तब उसे सेल करोगे, तो जो पैसा मिलेगा माइनस कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल, इट इज कॉल्ड द रेसिडियल वैल्यू, जस्ट लाइक अ स्क्रैप वैल्यू. Okay. Useful life, it is a period over which asset is accepted to available for the use by the entity. Okay. कब तक asset is available for use, मतलब asset is a functional. Otherwise, number of productions or similar unit accepted to be obtained from the asset. If it is not in further, if your year age is not measured in form of the year, then maybe in a number of productions. Okay. What is a carrying down? WDV, net book value, net block, carrying amount, all are same. Okay. So it is the amount at which asset is recognitions after deducting accumulated depreciation and accumulated impairment loss. मतलब historical cost में से आप accumulated depreciation and accumulated impairment loss, if any, deduct करोगे तो you will get a carrying amount. Okay, what is the impairment loss? So it is a higher of
amount which is a carrying amount of the asset and exceed a recoverable amount. So when carrying amount exceed its recoverable amount, कैरिंग अमाउंट है वो रिकवर अमाउंट से ज्यादा होगी, then it's treated as an impairment loss. What do you mean by the recoverable amount? It is a higher of fair value less cost to sell and value in use. ये दोनों में से जो ज्यादा होगा, fair value loss cost to sell and value in use, it will be treated as a recoverable amount. If recoverable amount is higher than the carrying amount, it treated as a impairment loss. Okay. What is a fair value now? So the price, yeah. I'm बोलिए. Right, sir. Okay. Okay. So price that would be received to sell of the asset or paid for the transfer of liabilities in a orderly transactions between the market participant at measured date. मतलब whatever the price received at the time of the sale of the asset or transfer of the liabilities, जो पैसा मिलेगा, it is called the fair value. Okay, between a market participants, willing buyer, willing sellers. और orderly transaction मतलब in a systematic transaction. Orderly transaction यहाँ ये मतलब नहीं होता है कि forceful transactions. Okay, systematically, step by step, all the legal procedure are followed. And value in use matlab it is a present value of future cash flows expected to be derived from the asset or cash generating unit. Fair value less cost to sell and value in use में जो ज्यादा होगा it will be treated as a recoverable amount. अगर recoverable amount carrying amount से ज्यादा है तो carrying amount exceeds its recoverable amount, then it will be treated as an impairment. Friends, it is a very, very, very important concept for all asset classes. If you are having any doubt, clear it right now, because in today's scenario, you will certainly get the cases related to this impairment loss, or if you are having any project related to window dressing or anything else related to this balance sheet or any other thing, then you will certainly entangled into this type of problem. If you are having any doubt or difficulty, clear it right now. Yes, sir. Please continue, sir. Sorry to interrupt. Okay. So what do you mean by the amortizations? So depreciation word is related to the tangible asset, and amortization word is related to the intangible asset. Okay. So it is a systematic allocation of depreciable amount of a intangible asset over its useful life. Okay. Depreciation word specifically used for the tangible asset. Amortization word specifically used for the intangible assets. Both meaning are same. Gross book value. Anyone? What do you mean by the gross book value? Gross book value, gross block, historical cost, acquisition cost, almost same terminologies. So it is a historical cost, other substituted for the cost to asset in a books of account. Asset खरीद के उसके पुटर यूज करने तक जो खर्चा हुआ, it is called a gross book value, gross block, historical cost. ये सारे एक ही terminology. Net book, historical cost minus accumulated depreciation and accumulated impairment loss, if any, it is a net book value. Net book value, net block, current carrying amount, all are the similar terms. All are related to books of account.
depreciable asset which are accepted to be used during a more than one accounting period and have limited useful life and held by the enterprise for use in the production or goods and services. So those assets has a limited life more than one financial year and used for the production of the goods and services and not held for a sale are called depreciable assets. Okay. So ये सारी जो terminology है, you have to remain. Okay. What do you mean by the depreciation? What do you mean by the depreciable amount? Residual value, useful life, carrying amount, impairment loss, recoverable amount, fair value, value in use, amortizations, gross book value, net book value, block of asset, and depreciable assets. Okay. So now difference between the income tax and difference company act. Sir, 1 minute, please. Sir, can you please explain amortization with an example, please? What do you mean by the depreciation? Depreciation का मतलब क्या है? Loss in a value of tangible asset. सही है? तो depreciation word जो है, it is a specifically used for the tangible asset. What do you mean by the tangible asset? Machine, anything which can be weighed. Any asset which has a physical form. Okay, any asset which has a physical form, just like a land, building, plant and machinery, computers, vehicles, tangible assets. Okay, same, there is a intangible asset also there in a, just like a patent, copyright, goodwill, customer list, drawings, and many things. Loss in the value of intangible asset is known as the amortizations. सही है? आपकी गुडविल है तो लॉस इन अ वैल्यू ऑफ गुडविल इज नोन एज अमोर्टाइजेशन. आउटडेटेड पेटेंट्स या पेटेंट्स लॉस इन अ वैल्यू ऑफ द पेटेंट्स, क्योंकि पेटेंट्स कितने साल तक रहते हैं आपके वैलिड? अबाउट 20 years. So year on year your patent is also losing a value. सही है? So loss in a value of intangible asset is known as a amortization, or loss in the value of tangible asset known as a depreciation. So word is related. जैसे भाई मैं खाता हूं तो खाना, और यही चीज मैं अगर भगवान को देता हूं तो वो प्रसाद हो जाता है. चीज तो दोनों एक ही है, बट एक खाना वर्ड मेरे लिए है, प्रसाद वर्ड भगवान के लिए है. तो वैसे ही टेंजिबल एसेट के लिए वर्ड है डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल एसेट के लिए वर्ड है अमोर्टाइजेशन. क्लियर? ओके सर. Yeah. Okay. So Income Tax Act and Company Act, how depreciations are treated. So it is based on the block of the asset. Block of the asset का मतलब क्या है कि भाई अंडर द इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए हर एक एसेट्स के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिसाइड किए गए. भाई 10%, 15%, 20%, 30% ऐसे. सो जो एसेट का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है उसे आप एक ब्लॉक बना सकते हो और एक ही ब्लॉक में डेप्रिशिएट कर सकते हो, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज द सेम. सही है? तो यहाँ पे प्रोविजन है कि यू कैन डू द डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द ब्लॉक ऑफ द एसेट. वहां कंपनी एक्ट में
you have to provide depreciation based on the individual asset only. यहाँ ब्लॉक नहीं बना सकते हो भाई, सब ये सारे एसेट की यूजफुल लाइफ सेम है तो इसको मैंने इकट्ठा कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। बट यहाँ जिस एसेट का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है उसे आप इकट्ठा कर सकते, एक लाइन एंट्री बना सकते हो। ओके, इट इज बाय द WDV मेथड ओनली, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ही डेप्रिसिएशन कर सकते हो। जबकि कंपनी एक्ट में you can provide the depreciation using the straight line method, depreciation, return down value method and unit of production method. ये तीनों मेथड से आप डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। ओके, इनकम टैक्स एक्ट में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफाइन किए गए हैं, जबकि कंपनी एक्ट में यूजफुल लाइफ डिफाइन की गई है। Adoption of the lower rate of the depreciation is not permitted. Okay, adoption of the higher rate or lower rate is a permitted. अगर आपको यूजफुल लाइफ कम या ज्यादा लेनी है तो यहाँ पे परमिटेड है, बट उसके लिए यू हैव टू प्रोवाइड द सपोर्ट। आपको बेसिस लिखने पड़ेंगे कि भाई यूजफुल लाइफ 15 है, बट फॉर द depreciation I have adopted 10 or 20. Why? आप कर सकते हो कम या ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, बट उसके लिए आपको बेस देना पड़ेगा। ओके, रेसिडुअल वैल्यू इज नॉट डिस्क्राइब, जबकि यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू शैल नॉट एक्सीड अबाउट द 5%, मतलब 5% तक रेसिडुअल वैल्यू लेते हो तो यू हैव टू नॉट गिव एनी बेसिस। 0, 1, 2, 3, 4, 5% तक कोई बेसिस नहीं देने पड़ेंगे। अगर उससे ज्यादा देते हो तो यू हैव टू प्रोवाइड द सपोर्ट। ओके, 100% डेप्रिसिएशन फॉर अ कॉस्ट लेस देन 5,000। अगर आपने कोई एसेट 5,000 से कम की परचेज की है तो पहले ही साल में पूरी डेप्रिशिएट कर सकते हो, जबकि कंपनी एक्ट में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आपने 100 रुपए की एसेट परचेज की है, देन ऑल्सो अप टू द यूजफुल लाइफ आपको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंट रेट फॉर द एक्स्ट्रा शिफ्ट, सिंगल शिफ्ट के लिए 10%, डबल शिफ्ट के लिए 15%, थर्ड शिफ्ट के लिए 20%। हर एक शिफ्ट के लिए, एक्स्ट्रा शिफ्ट के लिए डिफरेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफाइन किए गए हैं, जबकि कंपनी एक्ट में इट इज इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ द एक्स्ट्रा शिफ्ट। मतलब यू हैव टू फाइंड अ डेप्रिसिएशन फॉर द सिंगल शिफ्ट ओनली। अगर डबल शिफ्ट में मशीन चलता है तो यू हैव टू इंक्रीज डेप्रिसिएशन बाय 50%, 50% बढ़ाने जाए। अगर एसेट इज ऑपरेटिंग इन अ ट्रिपल शिफ्ट, 3 शिफ्ट में यूज होती है, तो यू हैव टू इंक्रीज द डेप्रिसिएशन बाय द 100%। ओके, तो सिंगल शिफ्ट के लिए, डबल शिफ्ट के लिए 50%, ट्रिपल शिफ्ट के लिए 100% डेप्रिसिएशन बढ़ाना पड़ेगा। कंपोनेंट अकाउंटिंग इज नॉट स्पेसिफाइड, जबकि यहाँ पे कंपोनेंट अकाउंटिंग इज अ मैंडेटरी। ओके, दो इज अ मैंडेटरी, मार्केट में अब ये प्रैक्टिस नहीं चल रही है। राइट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑफ अंडर इनकम टैक्स एंड द कंपनी टैक्स। ओके, एनी डाउट, किसी को कुछ भी पूछना हो तो? So do you have any option or to make a valuation of a property or a plant and machinery either by Companies Act or Income Tax Act? नहीं, इट इज द बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ वैल्यूएशंस। ओके, आपको कौन अपॉइंट कर रहा है और किस पर्पस से के लिए कर रहा है। ओके ओके, अगर आपको इनकम टैक्स एसएससी कोर्ट से आता है तो यू हैव टू फॉलो इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपको कोई कंपनी बोल दिया मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए वैल्यूएशन करना है, या मर्जर एक्विजिशन के लिए करना है, या परचेज प्राइस एलोकेशन के लिए वैल्यूएशन करना है, तो यू हैव टू फॉलो द कंपनी एक्ट। ओके, सही है।
So these are some indicative useful life which is given in the Schedule 2 of the Company Act. Okay, आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ समझने के लिए. So factor concerning the estimation of the useful life. Okay, ये पहले भी डिस्कस किया था. Utility, degree of usage, physical and working conditions, status of repair and maintenance, availability of the raw materials, availability of the spare part, and demand and supply of the product. ये factors आपको consider करने पड़ेंगे to justify your useful life. Now, second is a comportizations of the assets. Okay, Company Act में क्या बोला गया है कि भाई if you are purchasing one asset, just like you are purchasing one air compressor, आपने 50,000 का एयर कंप्रेसर खरीदा, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में यू टू नॉट राइट डाउन एयर कंप्रेसर 50,000. कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है कि भाई जैसे एयर कंप्रेसर की मोटर 5,000 की, एयर कंप्रेसर के टैंक्स 10,000 की, एयर कंप्रेसर का पिस्टन्स और ये 5,000 का, ऐसे कंपोनेंट में लिखना है. नॉट अ सिंगल लाइन एंट्री एयर कंप्रेसर 50,000. अब ये कंपोनेंटाइजेशन कैसे करना है, उसके लिए उन्होंने 2 क्राइटेरिया दिए थे. ओके, सो हैविंग अ सिग्निफिकेंट वैल्यू इन रिलेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट. कंपोनेंट कैसे करना है, जिसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो ऑफ अ टोटल एसेट. अब जैसे नो थ्रेशोल्ड की सिग्निफिकेंट किसको बोलेंगे कि मोर देन 50% है, कि मोर देन 60% है, या मोर देन 40% है. ओके, तो एक आपको कंपोनेंट करना था बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट, और दूसरा यूजफुल लाइफ ऑफ पार्ट शुड बी सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम द यूजफुल लाइफ ऑफ द मेन एसेट. और उसका जो पार्ट जिसका कंपोनेंट किया है उसकी यूजफुल लाइफ शुड बी सिग्निफिकेंट डिफरेंट. ये बेसिस पे आपको कंपोनेंटाइजेशन करना था. इससे हम समझते हैं कि एक एग्जांपल से, भाई एक मशीन है, सही है, एक मशीन का कंपोनेंट किया जिसमें हमें कुछ आइडेंटिफाइड कॉस्ट मिली. भाई इस कंपोनेंट की कॉस्ट हमें मिलती है और इसमें कुछ अनआइडेंटिफाइड कॉस्ट भी थी. कुछ कंपोनेंट की कॉस्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए इंडिविजुअल लेवल पे. जो आइडेंटिफाइड कॉस्ट थी वो पार्ट 1 थी जिसकी यूजफुल लाइफ 15 साल थी. पार्ट बी है जिसका यूजफुल लाइफ 10 था. 3 है, 5, 4, 10. सो दिस इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट हमने किया है. भाई आइडेंटिफाइड 6 पार्ट की कॉस्ट हमें पता चली और 7th पार्ट था वो अनआइडेंटिफाइड. दैट इज वी डन बेस्ड ऑन द कॉस्ट. अब दूसरा क्या बोला है कि बेस योर यूजफुल लाइफ शुड बी अ सिग्निफिकेंट डिफर. तो अब आगे क्या रहेगा कि भाई पार्ट 1 और 4 को, जिसकी यूजफुल लाइफ 15 साल थी, उसको हमने 1 कर दिया. 2 पार्ट नंबर 2 और 5 की जिसकी यूजफुल लाइफ 10 थी उसको हमने कंपाउंड 1 कर दिया. 6 और 3 की हमने जिसकी यूजफुल लाइफ 5 से कम कर दिया. और लास्ट में वी कम इन टू कंक्लूड इन 4 कंपोनेंट जिसकी यूजफुल लाइफ और कॉस्ट डिफाइंड है. और जिसका आपने कंपोनाइजेशन किया है उसका मार्केट से कॉस्ट मेजर भी करना था, मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना था कि आपने सही किया है या गलत किया है, या इन विच रेंज इज अ ट्रू. इट इज अ कंपोनाइजेशंस ऑफ द एसेट, अकाउंटिंग कंपोनाइजेशंस. सो इसके जो बेसिस थे, आइडेंटिफाई और सेपरेबल. सो पहले हमने ये देखा भाई, आइडेंटिफाई किया जो सेपरेबल था, सही है. फिर आइडेंटिफाई इन टर्म ऑफ द कॉस्ट. सो हमने यहाँ इन टर्म ऑफ द कॉस्ट किया. ठीक है. आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंटली इन टर्म ऑफ द यूजफुल लाइफ. तो यहाँ पे यूजफुल लाइफ पे किया और मर्ज किया. एंड मेजर द कॉस्ट फ्रॉम द मार्केट.
ऐसे यू हैव टू डू द कंपोनाइजेशन ऑफ द एसेट। कंपनी एक्ट में बोला गया है कि आपको एसेट रिकॉग्नाइज करनी है इन फॉर्म ऑफ द कंपोनाइजेशन। सिंगल लाइन एंट्री के बदले आइडेंटिफाइड पार्ट्स की कॉस्ट और यूजफुल लाइफ के बेसिस पे डिफर शो करना है। सही है? सो दिस वाज योर सेकंड चैप्टर्स, वैल्यूएशन डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एंड कंपनी एक्ट। तो इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी एक्ट, कैपेसिटी, वैल्यूएशन एज अ होल फ्रैक्शंस एंड पार्ट, economical obsolescence and economic viabilities, and plant layout या imbalance of a different sections is a point है जो आपको स्टडी करना है। ओके, एनी डाउट या एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ भी पूछना हो तो आउट ऑफ दिस? सर हाँ हेलो बोलिए। सर। हाँ बोलिए, सुन लो। एक्चुअली प्रीवियसली जो इन्वेंट्री जो प्लांटेड मशीनरी का इसमें आता है, और एक्चुअली प्रीवियस स्लाइड्स का है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री देखिए, अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर्स निकले हैं उसमें इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ द एसेट। अब देयर इज अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। सही है? तो क्या इन्वेंट्री है उसके बेसिस पे, बट अगर विजिबल जजमेंट देखे तो इन्वेंट्री एज अ पार्ट ऑफ द एसेट है। अगर कोई टेंजिबल इन्वेंट्री है या इन्वेंट्री में मशीनरी या कंपोनेंट ऑफ द मशीनरी है, सो एसेट वैल्यूअर कैन टेक अ हेल्प ऑफ द वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूअर, बट प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूअर इंडिपेंडेंटली इन्वेंट्री का वैल्यूएशन रिपोर्ट इश्यू नहीं कर सकता। सही है? एज पर द करंट जजमेंट्स एंड गाइडलाइंस। फ्यूचर में कहे, फ्यूचर में कुछ चेंजेस हो तो मे प्रोबेबल। Only the mandatory spares are covered under plant and machinery, right? Only mandatory spares or spare which is a free of cost with a purchase of the machine. What about consumables? Consumables कंज्यूमेबल तो प्लांट एंड मशीनरी है ही नहीं। आएगा। सही। और दूसरा चीज सर, हाँ, for material handling equipment like forklift, cranes, all those things, do they come under productive asset or non-productive? नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स। Suppose if they are, देखिए, if they, मैं एक बात समझाता हूँ आपको। प्रोडक्टिव एसेट या नॉन प्रोडक्टिव एसेट आप डायरेक्टली विथ नेम ऑफ द मशीनरी आप जज नहीं कर सकते। देखिए, ईओटी क्रेन इन अ स्टील प्लांट, yeah, ओके, ईओटी क्रेन क्या करती है भाई? जो स्टील प्लांट में क्या बोलते हैं उसे, लेडर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ईओटी क्रेन यहाँ प्रोडक्टिव एसेट हो जाती है। बट अगर ऐसी ही ईओटी क्रेन अगर गोडाउन में रखी है, स्टील प्लांट के गोडाउन में ही ईओटी क्रेन है, सही है, जो रो मटेरियल या फिनिश गुड को, मटेरियल हैंडलिंग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज होती है, तो वो ईओटी क्रेन नॉन प्रोडक्टिव हो जाती है। समझे आप कि वो यूज कहाँ होता है? इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, इट इज अ प्रोडक्टिव एसेट। अगर इट इज अ पार्ट ऑफ द सपोर्टिंग टू द प्रोडक्शन, इट बिकम अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट। सही है? सो किसी भी चीज को देखिए, प्लांट एंड मशीनरी में हम जब पढ़ेंगे, एक और है आपका केस स्टडी रिलेटेड, वहां पे भी प्लांट एंड मशीनरी को आप केस टू केस जज करना पड़ेगा। आप यूनिवर्सली नहीं बोल सकते भाई ये चीज है तो ये रहेगा। सही है? बोलिए।
Sir, we will discuss one report, right, sir, at the end of the training. No, report writing is not my chapter. No, sir. For example, how a plant and machinery report looks, how we have considered. Looks मतलब सैंपल रिपोर्ट राइटिंग्स देख सकते हैं, बट इट इज नॉट डिस्कस. मतलब रिपोर्ट राइटिंग के जो क्या पॉइंट्स होने चाहिए, इट इज अ वेल डिफाइंड इवन इन द वैल्यूएशन गाइडलाइंस जो है कि आपके रिपोर्ट्स में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, कवर होने चाहिए. फिर जो भी CSN आई है, सुकोज नोटिस वैल्यूअर को दी गई है, अगर वो सुकोज नोटिस पढ़ते हो और उसमें वैल्यूअर ने क्या गलती की थी या व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स वो पढ़ते हो, तो वो पॉइंट्स आप अपने रिपोर्ट में ऐड कर सकते हो. सही है. देयर इज अ नो स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ अ वैल्यूएशन रिपोर्ट अंडर दिस IBBI और अंडर द कंपनी एक्ट. कोई फॉर्मेट नहीं है, बट दे हैव मेंशन कि आपके रिपोर्ट्स में कौन कौन से पॉइंट कवर होने चाहिए, वो पॉइंट्स आपको कवर होने चाहिए. सही है. अब थोड़ा गूगल करोगे तो 2-4 सैंपल रिपोर्ट्स आपको इंटरनेट में भी मिल जाएंगे प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड. तो CEV की वेबसाइट पर भी सर कुछ सैंपल रिपोर्ट रखी हुई है वैल्यूअर्स जो मेंबर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए, बट दे आर नॉट द एब्सोल्यूट. मतलब कोई एब्सोल्यूट रिपोर्ट है ही नहीं. यस. सही है. यस. मतलब आपके एसेट, मतलब एक आप सीमेंट प्लांट के लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट बना रहे हो फंक्शनल गोइंग कंसर्न से, अगर वही सीमेंट प्लांट स्क्रैप कंडीशन में पड़ा है, नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम द लास्ट 1 डिकेड, तो दोनों का रिपोर्ट फॉर्मेशंस, एजम्पशंस, लिमिटिंग कंडीशंस दोनों चेंज हो जाएंगे. या बट कौन कौन से पॉइंट कवर करने चाहिए वो आपको मिल सकता है, क्या आपके हेड होने चाहिए. अदरवाइज रूल 8 में पूरा क्लियर दिया गया है हाँ. कि क्या पॉइंट्स होने चाहिए. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ. यस सर. यस सर. सही है. ओके. एनी मोर? कोई और क्वेश्चन? ये बात हमने IBBI को भी बोली थी, भाई सैंपल रिपोर्ट कुछ दीजिए, बट हम लोगों ने भी आज तक नहीं दिए है. या next we are going to study the leasing. Okay. Anyone? What do you mean by the lease? Lease is a contract between lessor and lessee. Lease is not contract. This is an agreement between lessor and lessee. Okay. So lease is an agreement whereby lessor convey to the lessee. क्या कन्वे करता है? लेसर कन्वे टू द लेसी क्या करता है? कन्वे, अरे रे रे रे, राइट टू यूज. किसके बदले में? इन रिटर्न ऑफ द पेमेंट और सीरीज द पेमेंट. कब तक? फॉर एन अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम. मतलब जो लेसर है, ऑनर है, वो अपनी एसेट लेसी को यूज करने के लिए देता है फॉर अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, और उसके अगेंस्ट में जो यूज करता है लेसी, वो पेमेंट या सीरीज ऑफ पेमेंट देगा. पेमेंट मतलब सिंगल पेमेंट, या सीरीज ऑफ पेमेंट मतलब पीरियोडिक पेमेंट. सही है. लीज कब कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है? एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? When legally binding. Legal, if it's legal. When agreement is legally enforced, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज एग्रीमेंट ही रहता है.
क्लियर। अब प्लांट एंड मशीनरी के लिए देयर इज ए नो रूल्स और एनी एक्ट इन इंडिया लीजिंग के लिए। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इनमूवेबल प्रॉपर्टीज और लैंड एंड बिल्डिंग की जो लीजिंग हो रही है, इट इज अ वेल डिफाइंड। लेसर कौन है, लेसी कौन है, क्या ड्यूटीज एंड राइट ऑफ द लेसर है, क्या ड्यूटीज एंड राइट ऑफ द लेसर है, लीज एग्रीमेंट के कंटेंट क्या होने चाहिए, इट इज अ वेल डिफाइंड एवरीथिंग। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इन मूवेबल प्रॉपर्टीज मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। बट इंडिया में मूवेबल एसेट्स के लिए या प्लांट एंड मशीनरी एसेट के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं है। तो जब भी ऐसे कोई डिस्प्यूट्स होता है तो दे आर हैंडल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में there is a section 148 called the section of bailment. अंडर द बेलमेंट सेक्शन में ये हैंडल किया जाता है। बेलमेंट का मतलब क्या होता है कि हैंड ओवर और चेंज द पोजेशंस। मैंने आपको दिया, हैंड ओवर किया, चेंज ऑफ द पोजेशंस। सो specifically, leasing industry concern has been straight in the country. Litigation related to the rights of lessor and lessee have been also too little contribute the law of lease than the general elements of the bailment. Hence, the law of lease based on the bailment which is stated in the contract. अभी इंडिया में जो लीजिंग बिजनेस है फॉर द प्लांट एंड मशीनरी वो भी छोटा है, बहुत छोटा बिजनेस है। और इसमें जो डिस्प्यूट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेलमेंट सेक्शन में सॉल्व किए जाते हैं। मेजरली ऐसे इश्यूज लीज एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन से सॉल्व किए जाते हैं। देन ऑल्सो अगर कोई कोर्ट में जाता है तो अंडर द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट इट इज ऑपरेट किए जाते हैं। ओके, व्हाट इज अ बेलमेंट? ओके, Section 48 in the Indian Contract Act, a delivery of goods, the delivery of goods by one person to another person upon a contract. Okay, bailment section under the Indian contract hai, so upon a contract. Lease is based on the agreement, bailment is based on the contract. Delivery of goods by one person to another person upon a contract that they sell when the purpose is accomplished, जब काम हो जाता है, be a return otherwise dispose according to the direction of the person delivering. वापस दे देना पड़ेगा या जो ऑनर है बोलेगा उस तरह से डिस्पोज करना पड़ेगा। सही है। सो पर्सन हु डिलीवर गुड्स इज नोन एज अ बेलर, पर्सन हु डिलीवरिंग द गुड्स इज नोन एज अ बेली। ऑनर को बेलर बोला जाता है और जो रिसीविंग पर्सन है इट्स अ बेली बोला जाता है। जैसे लेसर, लेसी, ऑनर को लेसर बोला जाता है, हु इज अ रिसीविंग राइट टू यूज उसे लेसी बोला जाता है। सही है। सो व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बेलमेंट? तो इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन में ही है। इट इज ओनली फॉर द मूवेबल गुड्स, नॉट फॉर द इमूवेबल गुड्स और द मनी। So bailment is not applicable to immovable goods or money. It is only for the movable goods. In bailment, possessions of the goods change. Change of possession can be happen by physical delivery or by any action which has the effect of the placing goods in the possession of the bail. फिजिकल डिलीवरी भी हो सकती है तो हैंडओवर, या मैं बोलता हूँ भाई मेरे मशीन कम इनटू द बेलमेंट, मेरे मशीन्स मेरे फैक्ट्री प्रीमाइसेस में
वॉइस नहीं तो वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस वॉइस Yeah, please wait. There may be some internet connectivity problem. Sanjay sir will be joining with us within few आ गया seconds. हो गया. Okay. So bailor will remain a owner. बेलमेंट में ऑनरशिप चेंज नहीं हो सकती. Okay. Bailey is obliged to return goods physically to the bailers. Okay. जो बेली है उसे गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा. वो किसी और हायर वैल्यू का गुड्स वापस नहीं कर सकता. जो बेलमेंट में है वही गुड्स वापस करना पड़ेगा, या जैसे बेलर बोलेगा वैसे डिस्पोज करना पड़ेगा. वो ऐसा नहीं बोल सकता भाई मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं और मैं एक चीज रख लेता हूं. ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं. सो दिस इज द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर द बेलमेंट. सो लीज हमने पढ़ा. नाउ टाइप्स ऑफ लीज में there are the two types of lease. One is a finance lease and another is a operating lease. What do you mean by the finance lease? So this is a lease that transfers substantial all risk and rewards incidental to the ownership of the asset. मतलब if all the risk and reward transferred इंसिडेंट टू ऑनरशिप, मतलब जो ऑनर के रिस्क एंड रिवॉर्ड थे वो अगर ट्रांसफर होते हैं टू द लेसी, देन इट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल रिस्क. और दूसरा क्या बोला गया है कि द टाइटल मे और मे नॉट इवेंचुअली ट्रांसफर्ड, मतलब टाइटल चेंज हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है. मतलब ऑनरशिप चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जबकि बेलमेंट में क्या चीज है, ऑनरशिप चेंज नहीं हो सकती. ओके. फाइनेंस लीज में इट इज पॉसिबल दैट एंड ऑफ द लीज पीरियड ऑनरशिप लेसी को मिल जाए. So when you can treat a lease as a finance lease. Okay. So the present value of minimum lease payment is almost equal to fair value of lease asset. जो मिनिमम लीज पेमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर एसेट की फेयर वैल्यू से ऑलमोस्ट इक्वल है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंस लीज. The lease period covers substantial portion of the useful life asset. It is a finance lease. अगर लीज पीरियड किसी एसेट का सब्सटेंशियल यूजफुल लाइफ कवर होता है तो इट इज ट्रीटेड एज अ फाइनेंस लीज. या a finance lease may or may not be end up getting a transfer to the lessee, it will be a finance lease. अगर end of the lease period asset लेसी को ट्रांसफर होने वाली है तो इट इज ट्रीटेड एज अ फाइनेंस लीज. ओके. और सेकंड टाइप इट इज ऑपरेटिंग लीज. सो व्हेन एसेट इज नॉट अ फाइनेंस लीज, ट्रीट एज अ ऑपरेटिंग लीज. ओके. एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस किसी को? सर मेरा डाउट वही था एक्चुअली. सो if lease is not a contract, then how it can be used in a business cases? Okay, sorry, how it is used in a Business cases means when we are doing business or producing something,
leases are done between supplier and business owner or business owner or suppliers. There is a also provision or clause when there is a dispute, okay, in an agreement, when there is a dispute, how this dispute will be resolved. So normally, these lease agreements, disputes are resolved by the arbitrations, not under the court. Okay, now who will we work as a, who are selected as an arbitrator? So some of the industrial experts are selected as arbitrators. So arbitrations is a different process. May probable there is a law of arbitrations also. Got it. So now leases are not addressed in courts for resolvements. So it is only addressed between arbitration. Arbitrations. If you are going to the court, then it will be a treat under the Indian Contract Act bailment. Yes. सही है तो but if it is agreement, we cannot go to the court, sir. It no, cannot be. It is arbitrations. Yes, yes. Okay. सही है. Again, lease is based on the mutual understanding, mutual agreement between the lessor and lessee. सही है. तो ये चीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही बनी है, तो रिजोल्यूशन भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही आएगा. अगर वो कोर्ट में या एनसीएलटी में जाते हैं तो एंटायर थिंग विल बी ट्रीटेड अंडर द bailment. Okay, so type of lease में finance lease, operating lease and conveyance lease. It is a very long term lease. Normally for the machinery it is not possible. So land lease as a conveyance lease. So how this lease transactions happen? Okay, so those who are the lessee who are looking the machine are selecting the asset कि भाई मुझे ये asset चाहिए. Who is capable to purchase the asset? सही है, वो asset purchase करने के लिए capable है. Then also many times is select to go for the lease कि भाई I want this asset on a lease. So here lessee is selecting the machines. Okay, then he goes to the lessor. If I am looking these machines on the lease basis, are you ready to? अगर lessor agree है, so they become in a lease contract. Lessor will order to the manufacturer and make the payment. Okay. End of the machinery manufacture, ownership will transfer to the lessor. Okay. Ownership transfer to the lessor, and जो machine है वो deliver करेगा lessee को. Okay. On the receiving machine, lessor will right to use, and उसके बदले में lessee lessor को payment of rent देगा. And lessee will enter under the maintenance contract and will make a payment for the maintenance. Okay. So these are the sequence of a lease. So the lessee, usually commercial or industrial establishment, locates and select the asset from the manufacturer or vendor and undertake full responsibility. मतलब who will select the asset and manufacturer? So lessee will select. The lessor agree to pay the sum of negotiated by the lessee to the manufacturer or supplier selected by the lessee. The sum would be paid only instruction received from the. जब भी lessee को machine मिल जाएगा तब payment का होगा. The lessee is accepted to provide certifications certifying that goods purchased have been inspected and are in order. जब भी मशीन लेसी को मिलेगा, लेसी बोलेगा भाई मेरे को जो मशीन चाहिए था वो मिल गया एज पर द ऑर्डर.
The lessor remain owners asset during the lease period. Lessor है वो owner रहेगा during the lease period. So the purchase options or rent reduction options may provided after the lease period. लेसर यहाँ पे लेसी को परचेज ऑप्शन या रेंटल रिडक्शन ऑप्शन दे सकता है. The finance lease therefore broken into two periods. One, the primary period, during which the lessor recover the cost of the asset and element of the profit, and secondary period in which lessor provide purchase option or reduction rental option. सेकंड ऑप्शंस में उसे सेकंड पीरियड में उसे ये परचेज ऑप्शन मिल सकता है. द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू ऑनरशिप ऑन द लेसी ड्यूरिंग द लीज पीरियड थ्रू आउट द लीज. अब फाइनेंस लीज होती है, इज अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द यूजफुल लाइफ. सो ऑब्सोलेशन ऑफ रेस लेसी पे रहेगा. The lessee will pay for the insurance, undertake the maintenance and other activities. सही है. और लेसर ये सारे मेंटेनेंस एक्टिविटीज में पे करेगा. Sir, it has to be as per the contract या it is permanent fixed है कि maintenance would be part of lessee. फाइनेंस लीज में it will be a part of the lessee as per the agreement or say lease. Sir, हाँ बोलिए. maintenance charges will be borne by lessee or lessor in finance? Lessee. Finance lease में it is borne by the lessee. Okay. During the primary period, lease is a non-cancelable. बताइए क्यों? Because he has given upfront payment, he has incurred expenses, so he cannot be burdened with this. सारा ट्रांजैक्शन तो लेसी के इंस्टेंस पे ही हुआ है. Okay. Now, lessor is giving a rent reduction option or purchase option to the lessee. बताइए क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चरिंग ही है बेसिकली. तो वो एसेट लेसी के पास ही गया. The asset is gone to the lessee. He's using it. He's maintaining it. He's insuring it. He's doing everything. It's just a way of structuring. वो ऑप्शन दे के रादर मुझे नहीं पता ऑप्शन है या कंपल्शन है. इट कुड बी कंपल्शन ऑल्सो. एट द एंड he'll have to purchase it for a certain price. In finance lease, I thought it is a compulsion that he has to purchase it for a pre-decided price. There is a no compulsion to purchase the asset to lessee. सही है. But lessor has an option to make an offer. Lessor has an option to make an offer to lessee कि भाई if you want to purchase, you can purchase. Otherwise, I am giving you rental reduction options. Basic questions: why lessor is doing this? To retain lessee. To retain lessee. Why? Why lessor is want to retain the lessee? He will find alternatives. Lessee will search for other alternatives. नहीं. The cost already he want to recover the cost for the नहीं. सर लेसर का बिजनेस नहीं है एसेट्स को रखने का सर. टेंजिबल ये मशीन और लेसर is a business in leasing the asset. He is not interested in an asset. हाँ सही है. एंड ऑफ द लीज पीरियड उसे मशीन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो क्या चाहता है भाई, मैं पैसा दूं और मेरे पैसे पे मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. सही है. प्राइमरी पीरियड में उसको उसका पैसा वापस मिल गया और उस पर इंटरेस्ट भी मिल गया है. सही है. तो अब सेकेंडरी पीरियड में बोलेगा भाई तुझे खरीदना है तो खरीद लेना एंड ऑफ द लीज पीरियड, या तुझे नहीं खरीदना है तो कम रेंट पे भी तुझे चलाना हो तो चला सकता हूं, मैं रेंट रिड्यूस कर दूंगा. क्योंकि ये जो एसेट है लेसर के लिए कोई काम की नहीं है.
ही इज इन अ बिजनेस ऑफ द लीजिंग, ये किसी और को चाहिएगा ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि इट इज अ सिलेक्टेड बाय द लेसी. लेसर इज नॉट इन डूइंग द बिजनेस ऑफ द लीजिंग ऑफ द मशीन्स, कि भाई मेरे पास बहुत सारी क्रेन है, आपको लेना ही नहीं तो ले लो. सही है. सो दैट्स व्हाई हियर रेंट रिडक्शन ऑप्शन और परचेज ऑप्शंस. And sir, this lesser is this lease, finance lease is basically restructuring or a different structure of term lending with the right of repossession बिना किसी लीगल हैसल के लेसर के पास में रिटेन्ड रहता है, बिकॉज द एसेट बिलोंग्स टू हिम. So it is with that purpose the structure has been created. Otherwise, it is like term lending only. या अगर वो भी देखा ना कि भाई एंड ऑफ द लीज पीरियड अगर लेसी के पास चला जाता है, इट इज अ फाइनेंस लीज. Yes. सही है. अगर इनिशियल कंडीशंस होगी तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ elsewhere. Okay. So subject to compliance with the term of lease agreement, the lessee has right to exclusive to retain possessions during the lease period. सही है. राइट टू यूज ही है लेसी को. एंड ऑफ द लीज मे बी अ ट्रांसफर ओनरशिप हो सकती है. द बर्डन ऑफ ऑब्सोलेशंस ऑफ द इक्विपमेंट फॉल्स ऑन द लेसी, okay, during the lease period. या ऑलमोस्ट ऑल. क्यों? Because almost lessee has used the life of the equipment. Yes, consuming some equipment. Yes. Yeah. That's why burden is on lessee. Okay. Hello. Audible? Now, are you speaking, sir? Now you are audible. Okay. हाँ, बताइए. We missed you. Okay. So he is using the equipment and consuming its some life. Then the burden of obsolescence falls under lessee only. Okay. So during the burden of obsolescence of the equipment falls to the lessee as substantial portion of the useful life. मतलब अगर useful life 10 years है तो it is a 9 to 8 years, it is a substantial lease period है, तो वो लेसी पे ही रहेगा. Clear? Yeah. Any doubt? Any question? किसी को? Sir, मेरा एक doubt है. Initially in the lease, you're saying lesser and lessee cancelable नहीं हो रहा है. So if lesser has misrepresented something in the lease. सही है. There is some conditions के फाइनेंस लीज या लीज कब कैंसल हो सकती है. Okay. So that we will study as a part of the Indian Accounting Standard lease. Lease is a non-cancelable, but under certain conditions, it is also cancelable. तो वो हम पढ़ेंगे. या बताइए आगे. Okay. Okay, same operating lease. So in an operating lease, the lessor in a business of the leasing of a asset, जैसे भाई टैक्सी ऑपरेटर, वो क्या करता है? लीजिंग ऑफ द टैक्सी. होटल ऑपरेटर, लीजिंग ऑफ द रूम्स. तो उसके पास बहुत सारी एसेट होती है जिसको वो लीजिंग करता है. जबकि फाइनेंस लीज में क्या होता है? लेसर के पास एसेट नहीं होती है, बट अगर कोई आता है बंदा कि भाई मेरे को ये एसेट लीज पे चाहिए, विल यू मेक द पेमेंट और मेक द अरेंजमेंट फॉर द पेमेंट, तो वो पेमेंट कर देता है. उसके पास एसेट नहीं होती. जबकि ऑपरेटिंग लीज में जो लेसर है उसके पास एसेट होती है और उसी को लीजिंग करता है. सही है. सो लेसी नेगोशिएट विद द लेसर
for the lease of the asset. Normally, it is a business of the lessor to lease such a asset and therefore own a number of such a asset. Okay, लेसी के पास नंबर ऑफ एसेट्स लीजिंग के लिए अवेलेबल रहती है. जैसे कोई जेसीबी लीजिंग करता है, जेसीबी लीजिंग के बिजनेस में, तो उसके पास 10-15 जेसीबी मशीन्स होंगे. वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए किसी को लीजिंग करता रहेगा. सही है. जबकि फाइनेंस लीज में क्या होता है कि लेसर के पास एसेट नहीं होती है, वो एसेट लेसी सिलेक्ट करके आता है और जो लेसर है वो सिर्फ फंड प्रोवाइड करता है और उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट प्लस फंड कलेक्ट करता है. और अगर एंड ऑफ द लीज पीरियड अगर एसेट सेल आउट हो गई तो वो भी पैसा लेसर को मिलता है. तो उसका इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट दोनों निकल जाता है और वो उसी में इंटरेस्टेड है, वो एसेट में इंटरेस्टेड नहीं. So the lessor is accepted to maintain the asset in a good working conditions. फाइनेंस लीज में ये लेसी करता है. Okay? The lessor retain ownership of the asset. फाइनेंस लीज में लेसी के पास राइट टू यूज रहता है ड्यूरिंग द एंटायर लीज पीरियड. Normally the asset leased out under the operating lease would not would have numerous lease period and lessee. Number of lease periods and lessee हो सकती है क्योंकि जो ऑपरेटिंग लीज है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है. मे बी एक दिन 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, which is not covered substantial portion of asset useful life. Okay. Risk and rewards incident to the ownership retained to the lessee. ये वहां पे लेसर पे होती है. ऑपरेटिंग लीज आर कैंसलेबल, जबकि फाइनेंस लीज का जो प्राइमरी पीरियड होता है इट्स नॉन कैंसल. जब तक लेसर को उसका इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट नहीं मिल जाता तब तक का पीरियड नॉन कैंसल. बर्डन ऑफ ऑब्सोलेशन शिफ्ट टू द लेसर. वहां पे बर्डन ऑफ द ऑब्सोलेशन टू द लेसी. The lease period, usually short period, may be started from the few days to the about a year, depending on the asset linkage and its frequency to use the as a factor, but it should not cover substantial portion of useful life. The lease rental, any single lease period normally do not recover the cost of the assets. एक ही लीज पीरियड में जो लेसर है उसको जो एसेट की कॉस्ट है वो रिकवर नहीं होती, जबकि फाइनेंस लीज में लेसर को ड्यूरिंग द प्राइमरी पीरियड जो एसेट की कॉस्ट रिकवर हो जाती है और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी मिल जाती है. ओके. या एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना हो तो. सर ये फाइनेंस लीज में फिर ये फाइनेंस लीज होती क्यों है? लेजी का अगर कुछ फायदा नहीं है, उसको प्रिंसिपल तो देना है, इंटरेस्ट भी देना है, प्राइमरी पीरियड भी रखना है, तो उसका क्यों करते हैं ये लोग फिर? या फाइनेंस की अनअवेलेबिलिटी उसकी वजह से करते हैं? देखिए ये सारे लीज के जो ट्रांजेक्शन होते हैं इट इज फॉर द मेनली जो होता है वो टैक्स बचाने के लिए होता है. दूसरा, कई बार जो लेसी लेसी है वो ऑब्सोलेशंस हैज करने के लिए, सही है, इन्वेस्टमेंट में ऑब्सोलेशन हैज करने के लिए इस प्रोसेस में एंटर होता है. या कई बार लेसर के पास सच में पैसे नहीं, लेसी के पास सच में पैसा नहीं होता है, इसीलिए वो लेसर के पास जाता है. हम अभी पढ़ेंगे एडवांटेज टू द लीज टू द लेसी. तो क्या होता है लेसी को एडवांटेज? फ्री वर्किंग कैपिटल फॉर द मोर प्रोडक्शन यूज.
प्रोडक्टिव उसका पैसा इन्वेस्ट नहीं हो जाता। सेकंड, मे कॉस्ट लेस देन अदर मेथड ऑफ द एक्वायरिंग, मतलब वो बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाता है, उससे अच्छी नेगोशिएटेड और इजी और फ्लेक्सिबल, फास्ट फ्लेक्सिबल एंड नेगोशिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे मिल जाती। इंक्रीज द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द लेसी, सही है, अगर ये नॉन अकाउंटिंग है, ऑफ बैलेंस शीट है, तो वो कहीं और से पैसा बोरो कर सकता है। हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेशंस आफ्टर द लीज पीरियड, सही है, मैंने 10 करोड़ का प्लांट या मशीनरी खरीद लिया, 6, 7 या 8 साल के बाद वो ऑब्सोलेट हो चुका और मेरा जो लीज पीरियड है 1 ही साल बाकी है, तो उससे हेज मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। क्रिएट ए अलाउेबल कॉस्ट अंडर द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये देखिए, जो रेंट देगा इट विल बी कैन ट्रीट एज ए एक्सपेंस, ओके, तो वो टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लीजिंग पेमेंट में भी इजी एंड अफोर्डेबल, ओके, अगेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है, तो वो क्वार्टर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, अगर एक क्वार्टर पे नहीं किया देन ऑल्सो विदाउट एनी पेनल्टी वो शिफ्ट कर सकता है। Operating lease offer a convenience one package rather than separate payments of their service maintenance contract. ऑपरेटिंग लीज में ये वन टाइम पेमेंट बोल सकता है, भाई मुझे महीना कार्ड चाहिए, बोल दे, सब कुछ मिला के क्या लेगा, ठीक है, तो ये बेनिफिट्स है टू द लेसीज। सेम बेनिफिट टू द लेसर्स क्या होता है कि स्टेबिलाइज द ग्रोथ रेट। नॉर्मली ये जो लीजिंग इंडस्ट्री या लीजिंग बिजनेस चलता है वो छोटी छोटी मशीन्स के लिए नहीं चलता, दोज आर द कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी, उसी के लिए बिजनेस चलता है। जैसे एरोप्लेन लीजिंग बिजनेस पे चलता है, कंस्ट्रक्शन मोबाइल्स लीजिंग बिजनेस पे चलता है, सीटी स्कैन या एमआरआई मशीन्स लीजिंग बिजनेस पे चलता है। तो कैपिटल कॉस्ट इंटेंसिव मशीन, तो ये मशीन्स को खरीदने की जगह अगर उसको लीज पे मिलता है तो इट कैन बी अ स्टेबिलाइज द ग्रोथ रेट। कोई खरीदने की जगह ये चीज अच्छी रहती है। कैन एक्सपांड इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगर सेल रहेगा या यूजेस बढ़ेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, सेल ऑफ सप्लाई इंक्रीज होगी। कंट्रोल ओवर द सेकंड हैंड मार्केट, वो एसेट सेल ही नहीं कर रहा है तो मार्केट में सेकंड हैंड एसेट अवेलेबिलिटीज ही नलीफाई हो जाएगी। अगर सेल नहीं करता है तो सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स बेनिफिट में बनेगा, वो लीज पे देता है तो। absorbs in the risks of the obsolescence, okay, in term of the operating lease and specialized service providers। देखिए, आप मर्सिडीज खरीदने जाओगे तो मर्सिडीज खुद अपना ऑफर देता है, सही है, इवन मर्सिडीज में यू विल गेट द अनदर ऑप्शंस, दैट इज द हायर परचेज भी मिलेगी आपको, ओके। एनीवन व्हाट यू मीन बाय द हायर परचेज? ओके, आप मर्सिडीज लेने जाते हो, वो बोलता है मर्सिडीज सर 3 करोड़ की है, आप बोलते हैं यार मुझे पास पैसे तो है, मुझे मतलब 3 करोड़ एक साथ में नहीं देना है, तो वो बोलता है आई एम गिविंग यू ऑप्शन टू हायर परचेज। शुरू में हायर करो, At the बाद में end of the portfolio- payment of the last installment, सही है, तो वो क्या अरेंजमेंट करके देता है कि भाई 3 करोड़ देना है, कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, हर साल मुझे 1 करोड़ 10 लाख दीजिएगा 3 साल के लिए, ओके। सो एट एंड ऑफ द 3 years आई विल बी गिव यू द ऑनरशिप, सही है, तो आपका जो राइट टू यूज है वो तो सेम ही दिन से मिल जाता है। पहले साल में आप 1 करोड़ 10 लाख देते हो, दूसरे साल में 1 करोड़ 10 लाख देते हो, तीसरे साल 1 करोड़, जब लास्ट पेमेंट देते हो तभी आपको ऑनरशिप ट्रांसफर मिलेगी, अदरवाइज यू हैव द राइट टू यूज। जब आप परचेस कर लेते हो तो क्या होता है कि आपको तभी राइट टू यूज ऑनरशिप मिल जाती है, जबकि हायर परचेस में जब आप लास्ट पेमेंट दोगे, लास्ट ईएमआई पेमेंट दोगे, तब आपको ऑनरशिप मिलेगी, सही है।
कोई पूछना डाउट? In economic terms, all these options are costly if finance is available. नहीं, देखिए फाइनेंस क्या होता है, इट इज नॉट फास्ट एंड नेगोशिएबल। आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसी के हिसाब से आपको मिलेंगे। बैंक का डिसाइड किया कि 8% से लेना है तो 8% से ही मिलेगा आपको, जबकि लेसर में मैनी टाइम्स पॉसिबल आपको 7%, 6.5% के बेस पे भी दे सकता है। अगर लेसर एग्री हो जाता है वो दूसरे दिन पेमेंट कर सकता है, जबकि बैंक में जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। सही है, तो it is a fast and negotiable, that is a fact. ये तो रिस्क रिलेटेड टू द लीजिंग, तो एक तो डिफॉल्ट रिस्क, जो लेसी है, द रिस्क ऑफ नॉट रिसीविंग लीज रेंटल ऑन अ शेड्यूल, the default of risk can be arise on account of the certain company specific industry specific wide factors। एक तो पूरा लीज रेंट नहीं मिलता है या शेड्यूल से लीज रेंट नहीं मिलता है, इट इज अ वन रिस्क टू द लेसर। रेसिडुअल वैल्यू रिस्क, लेसर ने जब लीज रेंट तय करने के लिए जो रेसिडुअल वैल्यू डिसाइड किया था, मतलब जो सोचा था, वो रेसिडुअल वैल्यू एंड ऑफ द लीज पीरियड नहीं मिली due to the maybe obsolescence or anything. The possibility of declining the estimated residual value of the equipment, this risk is particularly related to the high-tech equipment, and it is caused by the factor like a technology obsolescence and uncertainty regarding the product market of life equipments। सही है, so residual value जो सोचा था वो नहीं मिल रहा है एंड ऑफ द लीज पीरियड। Interest rate risk, interest rate risk refer to the change in the market rate of the interest we may adversely affect cost of fund and to the lesser। okay? मार्केट रिस्क बढ़ जाता है, उसकी प्रपोजन में ये जो लेसर है अपना रेट ऑफ रिटर्न या जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ा सकता है। परचेजिंग पावर रिस्क और से इन्फ्लेशन रिस्क, this refer to the reduction in value of the lease rental in the real term caused by the anticipated inflation, and this risk particularly levered into the long term lease। okay? आज की डेट में जो लीज तय हुआ है बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, required return of the lessor and residual value, future में वो due to the higher inflations can be deteriorates। फ्यूचर में मशीनरी की प्राइस आज 100 रुपए वाली मशीन की प्राइस फ्यूचर में 150 हो जाती है, और जो परचेसिंग पावर डिस्क्रीज हो जाता है, तो जो फ्यूचर में उसे पैसा मिलने वाला होगा वो डिटोरिएट किया, उसकी वैल्यू कम रहेगी। पैसा तो उतना ही रहेगा, उसकी वैल्यू कम रहेगी। पॉलिटिकल रिस्क, so political risk refer to the change in the government policies in general and financial policy in particular, which is have a significant impact on the economic viability and lease investment। अगर कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस चेंज हो जाता है, जैसे अभी चेंज हो गया कि यू कैन नॉट मेक द प्रोडक्शन ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक्स, तो मशीनरी जो प्रोडक्शन करती थी लीज बेस पे वो सारे एक ही गवर्नमेंट रेगुलेशन से आउटडेटेड हो गई, या गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाने हैं विच इज अ मोर एक्सपेंसिव, और वो एक्सपेंस करने के बाद में आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। सो दैट इम्पैक्ट ऑन द रीपेमेंट कैपेसिटीज। देन करेंसी और क्रॉस बॉर्डर रिस्क, करेंसी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन अफेक्ट द वैल्यू। क्रॉस बॉर्डर रिस्क, जैसे भाई जब भी लीज एग्रीमेंट हुआ था तब देयर इज अ टू कंट्रीज आर फ्रेंडली, बट ओवर अ टाइम्स
द कंट्रीज देयर इज ए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और कंट्री के बीच में जो रिलेशनशिप वो अच्छी नहीं रही, तो लेसर और लेसी को दोनों को एक रिस्क हो सकता है कि भाई लेसी बोलेगा भाई मैं तो पैसा देना चाहता हूँ बट मेरी गवर्नमेंट मुझे एक्सेस नहीं दे रही है। सही है, तो दैट इज ऑलवेज रिस्क, करेंसी रिस्क एंड क्रॉस बॉर्डर रिस्क टू द लेसर एंड लेसी. So these are the 6 risks related to the lease business. One is a default risk. Second is a residual value risk, interest risk, purchasing power risk, political risk, and currency cross-border risk. Then treatment of accounting in a lease. Okay. So accounting of the leasing. So at the commencement of the lease term, finance lease should be a recorded asset and liability. Okay. जो लेसी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा एट द लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एंड इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट. तो फाइनेंशियल लीज में जो लेसी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रीट करेगा एट विच वैल्यू, लोअर ऑफ अ फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मिनिमम वैल्यू. इस दोनों में से जो कम होगा उससे अपने बुक्स में दिखाएगा. Friends, it is very, very important to know the Indian accounting standards, and few standards are already mentioned in your syllabus for plant and machinery, SFA, as well as for land and building. Some Indian accounting standards are common for all the asset classes, and some are important for individual. As this accounting standard means 17 for lease. It is very important for almost all the asset classes how you have to transfer the amount in your books. Yes, sir. Please continue, sir. Okay. So again, the finance lease payment should be, मतलब जो payment देगा, finance lease payment should be appropriated between the finance charge and reductions of the outstanding liabilities. मतलब जो lease payment देगा वो दो चीज में डिवाइड करेगा, one as a finance charge and reduction in the outstanding liabilities. Okay. The finance charge should be allocated so as produce constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liabilities. देखिए, एसेट एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटी मतलब मुझे देना है. अब जैसे ईएमआई होता है तो ईएमआई में भी दो कंटेंट होते हैं, तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. वैसे ही जैसे लेसी लीज पेमेंट देगा उसको दो पोर्शन में डिवाइड करेगा. एक तो फाइनेंस चार्ज, मतलब मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया, और दूसरा मुझे जो मशीन का पैसा देना था, दैट इज अ रिडक्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, उसमें से मैंने इतना दिया. सही है, अगर मैं 100 रुपये देता हूं तो 100 रुपीज एज अ माई फाइनेंस चार्ज, और मशीन के जो मुझे 1000 रुपये देने थे उसमें से मैंने 90 रुपये दिए. दैट इज अ रिडक्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज. देखिए, हमारे फ्रेंड्स काफी बार ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मशीन लीज पर है या फिर ये उसकी अपनी है, ओनर है, या फिर रेंट पर ली गई है. देखिए, ये यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपको थोड़ा पता है तो जब आप उसकी बैलेंस शीट देखेंगे आपको पता चल जाएगा उसने किस अकाउंट में क्या एंट्री की और ये कौन सी मशीन उसकी लीज पर ली गई है. तो ओनली फॉर दैट पर्पज ऑल्सो दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. कि आपको सिर्फ उसकी बैलेंस शीट देखकर ही पता चल जाएगा कि उसने कोई एक पार्ट लीज पर लिया हुआ है, और वो पार्ट कौन सा है उसको आप आगे डिटेल में उसको डेवलप कर सकते हैं. यस सर. ओके, सही है. और the lessee, the depreciation policy of the asset under the finance lease should be a consistent with the owned asset. मतलब लेसी ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा if there is a no reasonable certainty that
Lessee will obtain ownership end of the lease period. The asset should be depreciated over the shorter of the lease term or the life of the asset. मतलब लेसी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा. तो फाइनेंस लीज में लेसी क्या करेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा. अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो लीज रेंट दिया है उसे टू पार्ट में अप्रोप्रिएट करेगा, फाइनेंस चार्ज, आउटस्टैंड रिडक्शन इन द आउटस्टैंडिंग ऑफ लायबिलिटीज, और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा फॉर द फाइनेंस लीज लेसी. सेम फॉर द ऑपरेटिंग लीज, लेसी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिखाएगा? सो लेसी पेमेंट शुड बी recognized as an expense in the income statement over the lease term on the straight line basis. तो ऑपरेटिंग लीज में लेसी ने जो भी लीज पेमेंट दिया है, इट विल बी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए एक्सपेंस ट्रीट करेगा, एज ए एक्सपेंस दिखाएगा. सो दिस आर द फॉर द लेसी and for operating lease and finance lease. Same for the lessor for operating lease and finance lease. Okay. So at the commencement of the lease term, lessor record a finance lease, balance it as a receivable. Okay. Lessor finance lease में मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं एज ए रिसीवेबल दिखाएगा एट अमाउंट इक्वल टू कितनी अमाउंट पे? नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज. ओके. लेसी क्या दिखाएगा? एसेट एंड लायबिलिटीज. किस अमाउंट पे? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट. लेसर क्या दिखाएगा? रिसीवेबल. किस अमाउंट पे? एट नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज. नेट इन्वेस्टमेंट मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया है माइनस जो भी खर्चा किया है, तो जो आएगा. देन लेसर शुड रिकॉग्नाइज फाइनेंस इनकम बेस्ड ऑन द पैटर्न रिफ्लेक्टिंग द constant periodic rate of returns on the lessor's net investment outstanding in response to finance lease. तो जैसे लेसर फाइनेंस चार्ज एंड रिडक्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दिखाता है, वैसे ही लेसर भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि भाई मुझे इतना रेट ऑफ रिटर्न मिला और इतना रिसीवेबल मुझे रिड्यूस हुआ, वैसे दिखाएगा. भाई ये प्रिंसिपल मिला और ये इंटरेस्ट मिला मुझे. In operating lease should be represented in the balance sheet according to the nature of asset. अपने बुक्स में ही ऑपरेटिंग लीज में लेसर अपने बुक्स में ही एसेट दिखाएगा, अपने बुक्स में ही डेप्रिसिएशन कट करेगा. सही है. और जो इनकम आएगा, पैसा मिलेगा, ऐसे इनकम स्टेट लाइन रिकॉग्नाइज करेगा. लीज इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज ओवर अ लीज टाइम पे ऑन द स्टेट लाइन बेसिस एंड द बेनिफिट डिलीवर टू द एसेट. तो अपने ही बुक्स में एसेट दिखाएगा, ऑपरेटिंग लीज में लेसर अपने ही बुक्स में एसेट दिखाएगा, अपने ही बुक्स में इनकम दिखाएगा और अपने ही बुक्स में डेप्रिसिएशन ट्रीट करेगा. ओके. सो लेसर एंड लेसी. फाइनेंस लीज में लेसी क्या करेगा? अपने बुक्स में एसेट एंड लायबिलिटी दिखाएगा, जो लीज पेमेंट करेगा उसे टू टर्म्स में अप्रोप्रिएट करेगा, फाइनेंस चार्ज, रिडक्शन इन द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, और अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा. ऑपरेटिंग लीज में लेसी जो भी लीज पेमेंट दिया है उसे एज ए एक्सपेंस ट्रीट करेगा. लेसर इन अ फाइनेंस लीज एज ए रिसीवेबल दिखाएगा, और जो ऐसे लीज रेंट मिलेगा उसे रेट ऑफ रिटर्न
इंडिकेट करेगा और रिडक्शन इन द रिसीवेबल करेगा। लेसर इन ऑपरेटिंग लीज अपने बुक्स में एसेट दिखाएगा, अपने ही बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा और अपने ही बुक्स में जो इनकम आएगी एज ए इनकम ट्रीट करेगा। ओके, या एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस किसी को? सर ये लीज इक्विपमेंट का वैल्यूएशन कैसे करें? या जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ बोलिए क्या था? लीज लीज इक्विपमेंट, लीज एसेट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? देखिए, जब भी एसेट लीज पे होती है तो यहाँ पे दो चीज आती है, एक तो लेसर पॉइंट ऑफ व्यू और लेसिस पॉइंट ऑफ व्यू। सही है? लेसर मतलब ओनर जो लीज पे एसेट देता है। बताइए, अब लेसर पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यूएशन करना है तो कैसे करेंगे? लेसर को क्या मिलता है? रेंट। रेंट। सही है? कितने साल तक रेंट मिलेगा? यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ नहीं यार, यूजफुल लाइफ थोड़ा होगा। बैलेंस बैलेंस हाँ, बैलेंस लाइफ ऑफ द लीज पीरियड। सही है? तो लेसर को बैलेंस लाइफ ऑफ लीज पीरियड तक रेंट मिलेगा। और मशीन की कॉस्ट भी लास्ट की। हाँ, और दूसरा क्या मिलेगा? एंड ऑफ द लीज पीरियड मशीन लेसर को वापस मिलेगा। सही है? तो जो रेंट मिलने वाला है वो रेंट को हम कैपिटलाइज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द वाईपी सिंगल रेट। और जो मशीन एंड ऑफ द लीज पीरियड वापस मिलने वाला है उसको भी कैपिटलाइज करेंगे, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशंस। और दोनों का सम इट इज अ वैल्यू फॉर द लेसर। समझे? और लेसी के लिए क्या होगा वैल्यूएशन? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, ये एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। ओके, लेसर को क्या मिलेगा? लीज रेंट अप टू बैलेंस पीरियड ऑफ लीज। एक तो ये मिलेगा एक चीज, और दूसरा मशीन एंड ऑफ लीज। लेसर को क्या मिलेगा?
सॉरी लेसी। लेसी, हाँ लेसी। बताइए लेसी का वैल्यू क्या रहेगा? मैं आपको कैश फ्लोस, जेसीबी कैश देता हूँ। फ्लोस, फ्यूचर फ्यूचर कैश फ्लोस, देखिए मैं आपको जेसीबी मशीन्स प्रॉफिट। रेंट पे देता हूँ। सही है, आप जेसीबी मशीन्स को कहीं पे यूज करते हो और वो यूज करके पैसा कमाते हो और वो उस पैसे में मुझे रेंट देते हो। तो कैसा रहेगा लेसी का इंटरेस्ट? इनकम नेट इनकम फ्रॉम द एसेट कब तक? अप टू बैलेंस बैलेंस लीज पीरियड। पीरियड। सही है। Sir, the font size is very small. Can't read anything, sir. हाँ भाई मुझे भी पता है बट मैं वही ट्राई कर रहा हूँ क्या करना है मुझे। ये है ना मतलब पता नहीं क्यों ऐसे। Select that text only. It is नहीं। small. हाँ वो ऐसे क्या बोलेंगे मतलब अब तक ठीक चल रहा था अब ये कैसे कर दिया वो मुझे भी पता नहीं चला बट हो गया। सही है। तो लेसी एसेट की जो बैलेंस पीरियड है लीज पीरियड है वो वो एसेट को यूज करके जितना पैसा कमाएगा इट इज द वैल्यू फॉर द लेसी लेसीज इंटरेस्ट। सही है। और लेसर के लिए जो लीज रेंट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू और एंड ऑफ द लीज पीरियड जो मशीन वापस मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू दोनों का सम लेसर की वैल्यू है। ये लेसी को कुछ सिंकिंग फंड का करना चाहिए क्या? अगर लेसी को एसेट रीबिल्ड करनी होती है तो सिंकिंग फंड मेथड आती है बट मशीन्स में तो उसे रीबिल्ड नहीं करना है ना तो सिंकिंग फंड का कोई इश्यू नहीं आता। सही है। सिंकिंग फंड क्या आता है रियल एस्टेट में आता है। जैसे मैं आपको लैंड देता हूं 10 साल के लिए और उस लैंड पे आप बिल्डिंग बनाते हो। सही है। और टर्म्स कंडीशन ये है कि भाई 10 साल के बाद जब लीज पीरियड खत्म हो जाएगा तो मुझे आप लैंड और बिल्डिंग दोनों वापस करोगे। मुझे बिल्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो यहाँ क्या होगा कि लेसी ने जो बिल्डिंग में खर्चा किया है वो भी चला जाएगा तो न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी उसे। और न्यू बिल्डिंग जब उसे कंस्ट्रक्ट करने पड़ेगी तब सिंकिंग फंड कम्स इनटू द पिक्चर जब आप लेसी के इंटरेस्ट फाइंड करते हो। यहाँ तो ऐसा मशीन में तो ऐसा नहीं है कि उसे नया मशीन रिबिल्ड करना है। सही है। या मशीन बनाने का खर्चा उसका लगा है। वहां बिल्डिंग बनाने का खर्चा उसका लगा था उसने सिर्फ लैंड ही लीज पे दी। Sir, suppose in finance lease, at the end of the lease period, suppose machinery लेसी का हो जाता है, then suppose उसका useful life खत्म होने के बाद how he will again buy new machinery without sinking fund. फाइनेंस लीज में यूजफुल सॉरी लीज पीरियड खत्म होने के बाद मशीनरी लेसी का हो जाता है। हाँ इसीलिए हाँ तो फिर क्वेश्चन क्या है? सपोज उसका होने के बाद नया मशीन लेना है आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ without sinking fund how only depending upon depreciation. दूसरा देता ना, दूसरा मशीन देता है लेज और लेज पे अगर लेना है तो। No, ऐसा टर्म्स ऐसा है सपोज इन द फाइनेंस लीज आफ्टर द लीज पीरियड लेसी का खाता में आ जाएगा एसेट। सो हाँ मतलब ऐसे हाँ ट्रांसफर टू द लेसी। हाँ वो लेसी को ट्रांसफर हो गया है हम्म। सपोज और तीन तीन साल विद इन 5 years उसका पूरा
लाइफ खत्म हो गया है. So how after 5 years he has to acquire new machine, na? So then in that case how? बट ये तो अब लीज Without पीरियड खत्म हो चुका है ना, हाँ खत्म हो चुका है. तो इट इज अ नाउ फ्री होल्ड बेसिस, तो वहां पे तो ये इक्वेशंस लगेंगे ही नहीं. हाँ but then I mean it will be the responsibility of lessee only to acquire the new machinery. हाँ, लेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई. लीज पीरियड खत्म होने के बाद मशीन उसका हो गया, फर्दर 3 साल चलाया, फिर नया मशीन ही मे गो टू द परचेज और मे अगेन री एंटर इनटू द लीज एग्रीमेंट. जब भी ट्रांजेक्शन्स में लीज एग्रीमेंट आएगा तभी ये लेसर एंड लेसी का इंटरेस्ट पाएगा. यू हैव टू गो विद द इनकम अप्रोच. अगर एसेट लेसी की या लेसी की है, सो इज द ओइंग, तो वो सिंपल डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला आ जाएगा. या So suppose in finance lease जो डिप्रिशिएशन निकालता है वो अकाउंट आई मीन लेसी का अकाउंट में जाएगा depreciation, right? हाँ, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द लेसीज अकाउंट, That amount. फाइनेंस लीज में. बट ड्यूरिंग द लीज पीरियड. सही है. ओके, और कोई? ओके ओके ओके. So we are ending session here. Okay. तो कल अगेन नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर. अगर कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो आप. सर आपने ये सिंकिंग फंड का बहुत अच्छा समझाया, तो उससे जोड़ के एक क्वेश्चन है कि जो हाँ, बोलिए. सिंकिंग फंड के ये है वाईपी ड्यूअल रेट लेते हैं अपन, तो जो रिडम्पशन रेट है थोड़े उसके बारे में भी डिस्कस करिए. वाईपी ड्यूअल रेट में हाँ, समझ वाईपी गया मैं. 1 हाँ, हाँ. अपॉन आर प्लस आर, तो रिडम्पशन रेट जो कम लेते हैं कैपिटलाइजेशन रेट से, तो उस पर थोड़ा प्लीज डिस्कस करिए. या रिडम्पशन रेट काय पे लिंक होता है, इट इज रिलेटेड टू डिप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन नहीं नहीं, मैं और समझ. मॉनेटरी पॉलिसी, अरे सर, समझ गया मैं. मार्जिनल रेट ऑफ लेंडिंग. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इसके लिए मुझे कहाँ जाना है? वैल्यू टू इनकम अप्रोच H2 ऐसा कुछ था. चलेगा, बाद में बताइए कल. नहीं नहीं नहीं, मैं वो सिर्फ स्लाइड फाइंड कर रहा हूँ. वेट करिए ना सर, क्वेश्चन पूछा है तो मैंने वो ब्लैक बोर्ड खोला, बट ब्लैक बोर्ड में मुझे लिखने में दिक्कत हो रही थी. वो इक्वेशन ऐसे टिपिकल है. स्लाइड खोलने दीजिए, वो स्लाइड कंप्यूटर में ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर पड़ा हुआ है. Otherwise, also we are going to take the case studies from tomorrow. मतलब ये लिखने में दिक्कत होती है एक्चुअली ऐसे इक्वेशन बोर्ड पर ना. तो आप इसी की बात कर रहे हैं सर. सही है. वाईपी ड्यूअल रेट इक्वल टू आर प्लस एस, जहां पे आर आपका बोला जाएगा रिमोन्यूरेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो सिंकिंग फंड का स्मॉल आर है वो बोला जाएगा रिकूपमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट या एक्यूमुलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट. यस सर, यस. सही है. देखिए,
100 रुपया आपका नेट इन्वेस्टमेंट है, उसमें से आपने 10 रुपया नेट इनकम किया। तो ये जो 10 रुपया है वो आपका मतलब कितना हुआ, 100 रुपये के अगेंस्ट में 10 रुपया, 10% हुआ। तो ये बोला जाता है आपका रेवेन्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने जो 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किए उस पे रेम्यूनरेशन मिला, मेहनताना मिला आपको। आप बोलिए 100 रुपये आपको इनकम हुई, नेट इनकम, उसमें से आप री इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो, कितना कर सकते हो बोलिए। लेस देन 100। अरे लेस देन 100 कैसे कर सकते हो यार, आपकी सालाना इनकम 10 रुपया है, हाँ तो सॉरी, उसमें से री लेस देन इन्वेस्टमेंट 10, हाँ लेस देन 10। आपने 10 रुपये में से समझो 4 रुपये री इन्वेस्टमेंट किए। ओके, इट इज कॉल्ड द रिकूपमेंट रेट ऑफ रिटर्न्स और एक्यूमेट ऑफ रिटर्न्स। आप क्यों ये 4 रुपये री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कि भाई फ्यूचर में मुझे पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, उस टाइम में ये पैसा यूज करूंगा। सही है। इट यस इज सर। एस, एस इज अ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मतलब ही ऐसा ही है कि भाई फ्यूचर में मुझे पैसा पड़ने वाला है, तो ये पैसा मैं फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करूंगा। सही है। अब हाँ आप कितना पैसा बचा सकते हो, हाँ बोलिए। हाँ यस सर। और जो कॉर्पस बनाना है, तो ये तो जो अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो अमाउंट का बनाना है, तो वो हिसाब से रेट ऑफ रिडम्पशन क्यों नहीं निकालते, या कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ रिडम्पशन, सही है। तो ये तो सिंकिंग फंड का इक्वेशन हो गया फिर आपका, एस इक्वल टू आर प्लस दिस। सही है। आपको कितनी साल में कितना पैसा बनाना है। यस। ओके, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है कि भाई आपको 10,000 रुपये बनाने हैं, कितने साल में, 10 साल में, और आपका 5% इंटरेस्ट रेट है। तो हर साल आपको कितना पैसा सेट असाइड करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशंस आप सिंकिंग फंड में रख दिए, आर इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 10। ओके, इसको सॉल्व करते हो तो आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है 0.079 आता है, मल्टीप्लाई बाय आप आपकी अमाउंट से कर रहे हो। तो हर साल अगर आप 795 रुपीज सेट असाइड करते हो, तो विथ इंटरेस्ट आपको 10 साल के बाद 10,000 मिलेगा। यहाँ समझिए, पहले साल में आपने एंड ऑफ द ईयर 790 रुपीज जमा किए, सही है। बैंक में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि एंड ऑफ द ईयर जमा कर रहे हो आप। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपके बैंक में 795 रुपीज हुए। अगेन एंड ऑफ द सेकंड ईयर आप जमा कर रहे हो। अब पहले साल का जो पैसा जमा हुआ था उस पे आपको इंटरेस्ट मिला 39 रुपीज। तो आपके बैंक में क्या हुआ, इंटरेस्ट 39 रुपीज। ये पहले साल का जमा किया था, दूसरे साल का जमा किया था, प्लस ये तीनों का मिला के आपके बैंक में 16,000 सॉरी 1,600 समथिंग डिपॉजिट हुए। अगेन थर्ड ईयर के एंड में आप जमा करते हो 79। पहले के जो जमा थे आपके 1,600, उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है 81 रुपीज। तो आपके एंड में 2,000 पाए। तो यही सर्कल घूमता जाएगा, तो 10 साल के बाद आपके अकाउंट में 9,000 मतलब 10,000 ऑलमोस्ट पैसा हो जाएगा। सही है। अब यही पैसा बनाना है फ्यूचर में, यही इक्वेशन में, कि आपको बिल्डिंग के लिए 10,000 रुपये चाहिए या 10 लाख रुपए चाहिए, तो आप अपनी इनकम में से मतलब बचाओगे, तो अब इनकम में से ही बचाओगे ना आप। 10 रुपये सर। कमा रहे हो तो 12 रुपये तो सेट असाइड नहीं कर सकते आप। So there is always your revenue rate of interest R will be a greater than accumulated interest. सही है। कमाई में से कितना परसेंट बचेगा, वो तो कमाई से कम ही परसेंट बचेगा ना। यस सर। तो दैट्स व्हाई
आपका रिकूपमेंट रेट है ऑलवेज लोअर देन रेमन्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। कमाई से ज्यादा तो बचा नहीं सकते आप ना। यस सर, थैंक यू सर। बताइए और कोई क्वेश्चन? Yeah, any other doubt related to today's syllabus? कोई डाउट नहीं है? अभी बस फटाफट बंद कर दो।